Okay, Sachin. Good morning. We are meeting after a long time. So, sorry for being late. I think earlier also I have been a little late, so you are accustomed to this. But this time, I think it's half an hour almost, no? 10 minutes usually. So, how are you and how the preparation is going on? पढ़ लिया सब हो गई तैयारी? How many of you are going to appear this year? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक ठाक लोग जा रहे हैं. क्या हाल है आपके ये बताओ पहले. एवरीथिंग इज फाइन. तो कोई गैप लग रहा है द आइडियल प्रिपरेशन दैट यू हैड इन योर माइंड व्हेन द जर्नी स्टार्टेड एंड द एक्चुअल प्रिपरेशन दैट यू हैव हैपन टू डू. इज देयर एनी मिसमैच बिटवीन द टू? कुछ लग रहा है गैप? तो क्यों लग रहा है? इरादे आपने बड़े किए थे या कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही? You could not do something or you had planned something that was not practically possible. What is the reason? कुछ तो सोचते होंगे ना अपने बारे में. चाय लेंगे आप? लोग पूछना बंद कर देंगे भाई ऐसे सर हिलाओगे तो. दैट गैप इज वेरी नेचुरल. वो होगा. वो होगा. Because when we make plans, we are most of the time unrealistic. Our plans are emotional, but our mind works rationally, isn't it? But the moreover, what we do is that we kill our rational mind in our emotional impulses. ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब कर लेंगे. प्रैक्टिकली नहीं होगा. वो गैप तो होगा. जैसे जैसे एग्जाम करीब आएगा वो गैप और बड़ा लगेगा आपको एंड यू विल हैव लर्नड हेल्पलेसनेस. लगेगा कि ये साल तो गया. ठीक है. फिर आपको लगेगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग अपॉन दिस ईयर एग्जाम यू विल बी प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. कहीं कहीं आपके अंदर अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर. ऐसा हो रहा है. और वो बड़े बड़े इरादे कर रहा होगा, बड़े बड़े वादे कर रहा होगा खुद से कि ये तो गया लेकिन नेक्स्ट टाइम आई विल बी सीरियस राइट फ्रॉम नवंबर. कुछ भी नहीं छोड़ेंगे. ऐसा लग रहा है. ऐसा लग रहा है ना. ठीक है. किताबों की लिस्ट बन रही है कि अगले साल कौन कौन पढ़नी है. ठीक है. तो इंस्टेड ऑफ फिनिशिंग दिस ईयर्स बुक लिस्ट वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग नेक्स्ट ईयर कि इन आवर चेंज्ड सेल्फ, ऑल्टर्ड सेल्फ. ठीक है. मेटामॉर्फोज्ड सेल्फ दैट विल नॉट बी अ कॉपी ऑफ व्हाट यू आर राइट नाउ. यू आर गोइंग टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट विच यू कुड नॉट डू दिस टाइम. ये सब गिल्ट ड्रीवन प्रोग्राम्स हैं. मत बनाओ इसे. ऑल दीज आर यूजलेस थिंग्स. यू आर नॉट गोइंग टू चेंज. अपनी वीकनेस अपने स्ट्रेंथ के साथ ही चलना होता है हमें. उसके साथ हार्मनी एस्टेब्लिश करो. एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर प्रिपरेशन. अब सवाल ये है कि वाई इन द वेरी मॉर्निंग आई एम इन प्रवचन मूड. वो तो मैं हो ही जाता. सर नींद बहुत आती है गर्मी में. मेरे ख्याल से देयर आर सम एनिमल्स, सम क्रिएचर्स रादर, जिनको गर्मी बहुत परेशान करती है. तो वो धीरे धीरे उन इलाकों से माइग्रेट करके चले गए जहाँ गर्मी ज़्यादा होती थी या बारिश कम हो गई. मेरे ख्याल से उसमें गैंडा, एलिफेंट और राइनो. राइनो भी उसी कैटेगरी में आता है ना. सो इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वी डू फाइंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स. बट वो धीरे धीरे ना, तो एक ऑप्शन एनिमल किंगडम के बेसिस पर एंड नेचुरल रिस्पॉन्सेज टू नेचुरल प्रॉब्लम्स के बेसिस पर मैं कह सकता हूँ कि गर्मी से एक ही इलाज है जो माइग्रेशन है. उसके अलावा कोई इलाज दिख नहीं रहा. बट वी द एनिमल्स आर ऑल्सो, वी द ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो एनिमल्स, ऑल्सो नोन फॉर एडाप्टेशन, इजंट इट. वी अडाप्ट टू द न्यू सर्कमस्टांसेस. तो कोशिश करो अडाप्ट करने की. और नींद बहुत आती है तो सो जाओ. जबरदस्ती पढ़ने से कुछ होता नहीं. बस ये कि सोने के बाद जग जाओ. ये नहीं कि जगते जगते सोते रहो.
वो कोई गिल्ट ड्रिवन स्लीप नहीं होनी चाहिए। जिस दिन मन कर रहा है आराम से सोने का, आराम से सो दबा के, ये नहीं कि सोते सोते सोच रहे हैं कि इतना टाइम बर्बाद हो गया। नहीं, मन कर रहा है आज नहीं पढ़ेंगे, मत पढ़ो उस दिन, बेशर्मी के साथ मत पढ़ो। इसलिए कि नेक्स्ट डे बात ये नहीं है, बात इट इज़ नॉट अबाउट कि हाउ मच टाइम नाउ यू आर डिवोटिंग, इट इज़ ऑल अबाउट कि हाउ बैलेंस्ड यू आर, हाउ कूल यू आर। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दिस प्रिपरेशन बिकम्स पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। कैसा टेम्परामेंट रखते हैं। हैव यू एवर नोटिस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन एनी ऑफ योर एग्जाम्स कि यू keep on revising, keep on reading for months after months. I think last 2 months, and in the examination hall you find no question out of those last 2 months reading. Have you ever come across any such situation? यानी कि जिस वक्त आप वो 2 महीने लगा रहे थे, सोच रहे थे कि बहुत सिंसियर हैं, घबरा रहे थे कि ये कंप्लीट नहीं हुआ, वो कंप्लीट नहीं हुआ, बेसिकली आप वो तो एक मिस एडवेंचर था, वो आप इन्वेस्ट सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे थे ना, वो पूरी पूंजी आपकी डूबने वाली थी। बट द फैक्ट इज कि यू स्टिल सर्वाइव्ड। तो हम तो इस एग्ज़ाम को अपने कंसोलिडेटेड नॉलेज और पर्सनालिटी के बेसिस पे क्वालिफाई करते हैं। ये 1-2 दिन की पैनिक कि आज नहीं पढ़े, 1 घंटा नहीं पढ़े, 2 घंटा नहीं पढ़े, इससे कुछ नहीं होता। ये सब रूटीन है, क्योंकि मेंटेन करना होता है तो करना होता है। तो ये बिना मतलब के जोश में नहीं आना है। नींद आ रही है, सो जाओ, आराम से सो जाओ, 2-4 10 घंटे सो, लेकिन 5 घंटे पढ़ रहे हो तो ठीक से पढ़ो। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कि आप unnecessary anxiety. Allow your mind to work. Otherwise, जितना एग्जाम करीब आएगा, there will be cognitive narrowing. You will spend more and more time with books, but your return will be less and less. इस चीज को अवॉइड करो, आराम से रहो। जिंदगी में कुछ तूफान थोड़े आने वाला है, बन भी गए तो क्या हो जाएगा। आईएएस बनोगे ना, गॉड तो बनने जा नहीं रहे, तो फिर अब आपको लगता है कि आईएएस इज गॉड ऑन द प्लेनेट अर्थ, तो दैट इज अनदर इशू। तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, उसके लिए नींद और ये सब नहीं खोना है, आराम से रहो। अब आराम होने का टाइम, अगर इससे पहले सिंसियर नहीं हुए तो अब की सिंसियरिटी किसी काम की नहीं आएगी, ठीक है। और जो पहले सिंसियर रहे हैं, अगर वो नॉन सिंसियर भी हो जाए अभी, उनको कुछ नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि देयर आर मेनी पीपल हु हैव येट नॉट स्टार्टेड देयर पीटी प्रिपरेशन, जिसके लिए आप साल भर से बेचैन हो। वो लोग हैं जो अभी सर्विसेज में हैं, अभी वो छुट्टी के लिए अप्लाई करने की सोच रहे होंगे कि पीटी देना है 10 दिन के लिए, कहीं से छुट्टी मिल जाती। वो आईआरएस होगा, कभी आईपीएस होगा, वो ट्रेनिंग में है, वो बहुत सारे काम कर रहा है। और आपको लग रहा है कि पिछले साल का पढ़ा हुआ उसको याद है, जैसे आपको याद होते हैं पीटी फैक्ट्स, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है नहीं। उसके पास हाँ कंसोलिडेटेड अवेयरनेस है, उसकी अपनी पर्सनालिटी है, उसका अपना पेशेंस है, ये उसके पास है। उसको लेकर वो पीटी से 10 दिन पहले मार्केट में आएंगे, और आप देखते हैं कि अक्सर इस तरह के लोगों का दोबारा सिलेक्शन होता है, इसलिए कि उन्होंने किया हुआ है, उन्होंने अपनी पर्सनालिटी उसके हिसाब से ट्रांसफॉर्म की है, अपने अवेयरनेस को एक्सपेंड किया हुआ है, इमोशनली अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। उनके लिए बस अब कुछ चीज़ें होती हैं जो उनको बस देखना होता है, कुछ डेटा देख लिया, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए, दे नो व्हाट टू डू। तो अगर आपकी तैयारी ठीक चली है तो तैयारी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप थोड़ा ज़्यादा सो ले, थोड़ा कम सो ले, प्रॉब्लम कब होती है, जब फंडामेंटल वीकनेस होती है तैयारी में, और हम उसे टेम्पररी एंग्जाइटी के जरिए दूर करना चाहते हैं, और वो होगी टेम्पररी एंग्जाइटी, आपको होगी। पाप आता है ना, आदमी जब डेथ बेड की तरफ जाता है तो उसका पाप उसके सामने दिखता है आंखों के। हैव यू एवर डाइड लाइक दिस? कभी मरे नहीं हो ना, दैट्स वी डोंट नो, ठीक है। मुझसे पूछो, ठीक है। हाँ, 12 मरा हूँ मैं, कई बार मरा हूँ मैं, तो ठीक है। तो आई रिमेंबर कि व्हेन आई अप्रोच माई डेथ बेड, पूरी लाइफ पीछे चलती है। ये एग्ज़ाम आपका डेथ बेड की तरह है, जिसकी तैयारी नहीं हुई है वो जब जाएगा उस तरफ, तो उसकी पूरी लाइफ उसके पीछे चल रही होगी। रिग्रेट्स होंगे, रिमोर्स होंगे, अनरियलाइज्ड गोल्स होंगे, अनफिनिश्ड टास्क होंगे, और वो उसी को सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि दैट इज़ हेल। तो नरक में होंगे अभी। और जिनकी तैयारी ठीक चली है, लाइफ से सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। एंग्जाइटी तो उन्हें भी होगी, बिकॉज डेथ इज़ नॉट सिंपल थिंग, लेकिन दे आर इन द हेवन। तो अभी एंग्जाइटी मैनेज करो चुपचाप,
ठीक है, और 10 15 दिन 20 दिन या महीने जो बचे हुए हैं, मान लो मेरी बात कि अगर तैयारी आपकी नहीं हुई है तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो हुई हुई तैयारी है ना, जो हो चुकी है, उसको खो जरूर दोगे। 10 दिन काफ़ी होते हैं उसके लिए। 10 दिन तो छोड़ दो, 3 घंटे काफ़ी होते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। बहुत अच्छी तैयारी, एग्जामिनेशन हॉल में फ्रस्ट्रेटेड, एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ गई, हो गया परफॉर्मेंस खराब। तो तैयारी करने का समय नहीं है, लेकिन तैयारी खोने का समय जरूर है। तो हुई तैयारी अगर हो चुकी है तो उसको बचाओ, दैट शुड बी योर प्रायोरिटी। ये नहीं कि ये भी करें, वो भी करें, ये भी करें। द फोकस शुड बी ऑन रिवीजन एंड सर्जिकल स्ट्राइक्स, दैट जस्ट फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। सर्जिकल स्ट्राइक समझते हो ना, जो एरिया लगे कि बहुत ज़्यादा पढ़े हुए, ये रिवीजन करोगे कुछ याद आता हुआ दिखेगा नहीं, लगेगा सब भूल चुके हैं। कभी कभी रिवीजन से एंग्जाइटी भी होती है। व्हेन वी रिवाइज थिंग्स वी रियलाइज कि वी रिमेंबर नथिंग। तो फिर पॉलिटी छोड़ के इकोनॉमी, इकोनॉमी छोड़ के पॉलिटी आए, एवरीवेयर वी हैव द सेम सिचुएशन। सो व्हाट टू डू? हैव पेशेंस, योर माइंड इज वेरी पावरफुल डिवाइस, ट्रस्ट योर माइंड, it is observing. It taught you the language, complex language, when you did not realize it even. So just stay in the process and try to reduce your anxiety. Don't try to finalize things, just familiarize. Just expose yourself to the learning situation. Don't judge your preparation now. Don't test your recall now. This is not time for that. It is time for having patience and getting involved in the process with a cheerful, क्या कहते हैं, cheerful mind तो नहीं कहेंगे, cheerful क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ माइंड। थोड़ा खुश रहो, अब पहले से कम समय दे सकते हो, यहाँ तक मेरी सोच है, ठीक है ना। आपने बहुत समय दिया है तैयारी को, ठीक है, आप नहीं सोते रहे, वो करते रहो। वो शुरुआती दौर होता है, जोश होता है, लेकिन अब अपने आप को बचाना, मेंटल स्टेट को बचाना इज समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो नींद आनी बंद हो जाएगी, भूख लगनी बंद हो जाएगी, और भी बहुत कुछ होगा आपके साथ जो आई कांट टेल हियर, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम बैक टू द सब्जेक्ट, and the subject is medieval India we are doing together. Is it so? And what all we have completed? Okay, I think this is Al-Biruni. Al-Biruni about India. India through the eyes of foreigners, from Megasthenes to Max Muller. Now in that series, Al-Biruni is very important observer. Important not only in terms of the details he is providing, but his treatment to those details. The kind of approach he is displaying in the medieval time is rare. He is unbiased, he is scientific. Being unbiased is difficult even for we the people of India today. But then there is postmodern revivalism, so that is another issue. But in the medieval religious context, he is not looking at the things from the or through the prism of religion. This is something quite rare in his case. And he was an astronomer, he was a scientist, and this scientist received the patronage of Mahmud Ghazni, lived in his court for some time. Earlier he was in Central Asia, and Mahmud Ghazni captured him, perhaps in one of his wars, realized his worth and extended his patronage to him. So before that, I think we have talked about something else, that is Indian feudalism. Indian feudalism. See, I don't know about other subjects, but in history, I will tell you that facts and details are in plenty. So avoid that temptation of knowing everything. Try to know in a better way the things which can be known easily and which have relatively or which are of relatively permanent importance or permanent significance. This is not time to chase unwanted and unnecessary and unknown facts and details, because there is no limit to that. Stay connected with the current. यूपीएससी हवा में पागलपन में सवाल नहीं पूछा करती है। अब 2 साल के बाद अगर थोड़ी अवेयरनेस बढ़ जाती है तो आप देखना, जो आपने अटेम्प्ट दिया था पहले, आपको लगेगा कि दिस क्वेश्चन वाज वेरी जेन्युइन, वो उस साल पूछा जाना चाहिए था। देयर इज़ अ टाइम लैग। यूपीएससी जितनी अवेयर है, हम उतने अवेयर नहीं है। बस उस अवेयरनेस को बढ़ाएंगे तो उस मोमेंटम को, उस स्पिरिट को कैप्चर कर लेंगे।
अदरवाइज एक बात बताओ, हिस्ट्री में कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितने मॉन्यूमेंट्स हैं, आपके आर्ट एंड कल्चर में कितने आर्टिस्ट हैं, कितने इवेंट्स होते हैं? इज इट पॉसिबल फॉर यू टू टेक नोट ऑफ ऑल दोज थिंग्स? क्या जो बन गए हैं वो सब जानते हैं ये सारी चीज़ें? तो अभी भी ना जाने बन जाओगे, टेंशन नहीं लेना। स्प्रेड और इंक्रीज योर अवेयरनेस लेवल, द कैपेसिटी टू नो, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे अभी एक एग्जांपल याद आ गया, क्योंकि अभी भी एग्जांपल मैंने सुना है, और मैंने पहले भी बताया था कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो सोर्स ऑफ नॉलेज के तौर पे इस्तेमाल करने जा नहीं रही, कि आपने बहुत मेहनत से तैयारी की है, विज़न भी ज्वाइन किया था, WSK से पढ़ा था, तो बताओ मोहम्मद गजनी ने किसको पैटर्नेज एक्सटेंड किया था? आपके काम का नेचर ऐसा है क्या? उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं। हम कोचिंग वालों को तो कोई पूछता नहीं, तो छोड़ दो हमें। आपको जब सोर्स ऑफ नॉलेज की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, यू आर गोइंग टू बी यूज्ड एज अ डिसीजन मेकर, एंड अ डिसीजन मेकर मस्ट हैव अवेयरनेस। उसी के लिए टेस्ट होगा ना आपका, और क्या होगा? तो अवेयरनेस का टेस्ट है ये। तो आपको उतना ही मिलता है कहीं से भी जितने के लिए आप अवेयर होते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। वो एग्जाम्पल मैंने सुना अभी, मेरे किसी सीनियर ने दिया मुझे, तो मैं आपको पहुंचाना चाहता हूँ कि आप समुंदर के किनारे खड़े हैं और आपके पास सिर्फ एक बकेट है, बाल्टी कहते हैं जिसे, तो कितना पानी ले पाएंगे आप? एक बकेट। तो समुंदर की गलती है कि आपकी कैपेसिटी नहीं है। नेचर हैज़ मेनी थिंग टू ऑफर। कितना ले पाते हैं हम? जितना हमारी कैपेसिटी है। NCRTs, टेक्स्ट बुक्स, क्लासेस, क्लास नोट्स, दे ऑल्सो हैव मेनी थिंग टू ऑफर। कितना ले पाओगे आप? जितनी आपकी कैपेसिटी हो। ठीक है। तो कैपेसिटी कैसे बढ़ती है? उसी को बढ़ाना होता है। तो कैपेसिटी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे फैक्ट्स और डिटेल रटने से नहीं बढ़ती है। कैपेसिटी बढ़ती है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच से। ठीक है। तो अगर आपको फिलॉसफी समझनी है तो साइंस पढ़ो, फिलॉसफी समझनी है तो साइंस पढ़ो, बिकॉज फिलॉसफी इज नॉट अबाउट कि आप फैक्ट्स रट लोगे फिलॉसफी की ओर हो जाएगा। इसलिए जो लोग सिलेक्टिव मेथड फॉलो करते हैं उनकी वो पर्सनालिटी बनती ही नहीं जो एक डिसीजन मेकर के लिए चाहिए। अगर आपको साइंस समझना है तो फिलॉसफी पढ़ो, साइंस भी पढ़ो, लेकिन विदाउट फिलॉसफी यू कांट अंडरस्टैंड साइंस। उसी तरह से अगर आपको इकोनॉमी समझनी है तो पॉलिटी पढ़ो। तो आपको लग रहा है कि पॉलिटी की पढ़ाई इकोनॉमी से अलग है, या सोच रहे हो कि सब कुछ छोड़ के पॉलिटी में हम बिल्कुल कुआं खोद देंगे? प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग कुआं खोदते हैं, अमर्त्य सेन से जाके पूछो, ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट, क्या उनको हिस्ट्री नहीं आती? उनके हिस्ट्री के ऊपर लेक्चर इरफान हबीब जैसे हिस्टोरियंस बैठ के सुनते हैं। स्टूडेंट्स को छोड़ दो, लेकिन ही इज़ एन इकोनॉमिस्ट। इरफान हबीब जब बोलते हैं, हिस्टोरियन है जिनको मैंने बोलते हुए देखा है, तो और दूसरे लोग भी सुनते हैं, साइंटिस्ट भी सुनते हैं, दूसरे हिस्टोरियंस भी सुनते हैं। आपने देखा ना, टॉप पे सब जाके मिल जाते हैं। तो उस लेवल तक नहीं जाना हमें, लेकिन उसी डायरेक्शन में तो जरूर जाना है, बिकॉज दैट इज द ओनली डायरेक्शन। तो ये सिलेक्टिव भी नहीं कि हम इकोनॉमी अलग से कर लेते हैं, पॉलिटी अलग से कर लेते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज गोइंग टू इंक्रीज योर कैपेसिटी। यही तैयारी है, इसके अलावा कोई तैयारी नहीं है। एंड ही वॉज अ मास्टर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। Alberuni we are talking about. He talks about geology, do you remember? He talks about geomorphology. He talks about Indian climate, and those two subjects whose names are always difficult for me to pronounce, botany and geology. And what else? He talks about chemistry, alchemy. He talks about almost everything. Raja Bhoj, do you know Raja Bhoj? A scholar king of India. He has written also books on almost everything. So this is something that, so we have to follow the approach of Al-Biruni, scientific, observation, and that too quite comprehensive. Sir, you are inaudible. I also have a complaint. And what is that complaint? You are not visible. You are
नॉट विजिबल। अरे शिकायतें तो दोनों तरफ से हो सकती हैं। मैं सुनाई नहीं दे रहा, आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो नाउ, एक तो ऐसे देर से आया, ऊपर से प्रवचन के मूड में चला गया, ऊपर से क्लासेस भी कम है, तो यू मस्ट बी हैविंग सम इरिटेशन इनसाइड यू। उसी को रोकना होता है, तैयारी उसी का नाम है, उसी को पेशेंस कहते हैं। आई एम टेस्टिंग योर पेशेंस but no longer, because I am also concerned about my safety. So before any attack happens on me, ये क्या था, मैंने क्या कर दिया था इसमें? Okay, this is my video. Okay, this was me in the last class. Okay, okay, thank you. So now, next topic, I think we have made a list of the topics. After Al-Biruni and Indian feudalism. Before that, I think we talked about Rajput dynasties and their origin, theories related to that. Cholas and their system of local self-government. Pratiharas, Palas, Rashtrakutas and the tripartite struggle. All these things are clear. Now let us proceed further, and we are now going to move towards foreign invasions. They are categorized into two: the invasions which took place around this time, the Arab invasions and the Turkish invasions. Let us first talk about the Arab invasion. Make a heading, make a bigger heading, write external. I hope that technical problem is solved now and I am audible. That was in the lighter vein. You are not visible, but it was just to draw the attention to this problem. So now write A. External invasion is your topic. Now A, and there you put a heading, the Arab invasions. Yeah, the Arab invasions, yes. The Arab invasions. You must be knowing about the Arab, today known as Saudi Arab, a peninsula, perhaps peninsula, no? Arabian Peninsula. Yes. There we have advent of Islam in the 6th century. And before that we have tribal societies. But now there was a new basis, a new ideology for what is called Asabiya, that is fraternity and brotherhood. And that brotherhood was soon to become not only religious and spiritual, but also political. That is not only increasing settled life or increasing contact with the settled civilizations, but also what we can say, changing notions related to the followers or community of Muslims, that is called Ummat or Ummah. And now the Arabs by the 8th century were political powers, expanding themselves in different directions. That is part of Arabic history we are not concerned with. But the impact of that political expansion was felt by a part of the Indian subcontinent more directly in the 8th century, and by the rest of India a little indirectly in the subsequent centuries. Is this version clear? So here we are going to write something, write few lines, right? The first Arab invasion, the first Arab invasion, the first heading, right? External invasions, then a subheading Arab invasions, and then dictation. The first Arab invasion took place on, can you tell me the place? On Thane, 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 near modern Mumbai. Modern Mumbai or Amchi Mumbai? Amchi Mumbai, okay. Write both if you so wish. Write near modern Mumbai. I think Thane is a suburb of Mumbai today. And this was a NAVAL, naval expedition.
this was a naval expedition which proved to be, which proved, P-R-O-V-E-D, proved to be abortive, A-B-O-R-T-I-V-E, proved to be abortive, that it was unsuccessful. We know about Arabs, they were traders also, and they had been settling on the western coast for even before the advent of Islam, we can say. We have people who claim themselves to be descendants of Arabs, and we know the just Arabian Sea, and these kind of seas were not dividing continents, rather they were uniting continents. So Arab presence in India from the very early days in as traders, but for the first time after that political transformation, after the advent of Islam, they had tried to control a part of India or attack some place in India as invaders. The time was 636 AD. Have you written this date? In bracket, right? 636 AD. It was 4 or 5 years after the death of the Prophet. Then write the first successful invasion of the Arabs, the first successful invasion of the Arabs took place on Sindh, in the year 712-13, in the year 712-13. You can also write first quarter of the which century? 8th century. First quarter of the 8th century. So while writing your answers, they can ask you any kind of questions. I think we should avoid crude dates because they kill the joy of reading. Getting this idea? So instead of writing 7, 12 and 13, it would always be better to write in the beginning of the 8th century or in the first quarter of the 8th century. This is something I think more preferable, more soothing, more comfortable in reading instead of exactly and precisely mentioning the dates. Clear? Then write, have you completed the sentence? The first Arab invasion took place in the first quarter of the century. Led by, continue in the same, don't give full stop. Led by Muhammad bin Qasim. Led by Muhammad we can write, then write bin, B-I-N, and then write Qasim, Muhammad bin Qasim. Right? He defeated the king of Sindh, Dahir. He defeated the king of Sindh, Dahir, who belonged to the dynasty of Chach, who belonged to the dynasty of Chach. If they ask you dynasty, Chach. If they ask you the ruler, Dahir. The invader, Muhammad bin Qasim. See, you must be knowing Sindh and that some parts of northwestern India beyond Indus always having more foreign influences than others, geographical reasons. And even in the ancient time, that area had been conquered by the Persians. You must have heard of an empire in the ancient world, particularly known for its conflict with the Greek Empire or the Greeks, that is called Achaemenid Empire, Achaemeni Empire in Hindi. So that area had also been part of the Achaemenid Empire. It was 20th province, this area of the Achaemenid Empire, and its income was something that was a matter of envy
for the Greeks. That Greeks were talking about Persia, and while talking about Persia, they were talking about the Indian parts of their empire and the income that it was generating for the Persians. Is this question clear? So that trend continues even in the medieval time, and it became part of the way this area earlier had been part of the Achaemenid or Achaemenid Empire. Now it also became part of the Arab Empire. Is this question clear? Then write a book written by a book written by an anonymous author. A book written by an anonymous author. Anonymous author. Namely, can we write namely? Anonymous author, namely. If the author is anonymous, it simply means that we don't know the name. So don't write this way. You know my habit of dictating anything? Yes. So an anonymous author entitled, the book is entitled as Chachnama. Entitled as the Chachnama deals with the history, deals with the history of Sindh, deals with the history of Sindh. See, around this time, that is 11th, 12th centuries, we do find some works which are very important sources for historical reconstruction. These works are termed as regional chronicles. Chronicle, you know, that is when the events are described in a chronological manner. So we have many history books, but some regional focus. One such book is Chachnama. They can ask you simple this kind of question also. Chachnama deals with the history of A, Karol Bagh, B, Karol Bagh metro station, C, ठीक है, Karol Bagh coffee shop, and D. That place I don't know. ये मैंने ऐसे ही invent किया अभी. And D, Sindh. So which one is going to be your answer? Sindh. This is something that we have applied your mind, that is called elimination method. ये बहुत सिंपल तरीके से यही एलिमिनेशन है, ठीक है, और एलिमिनेट ही कर पाओगे आप जीवन में, बता रहा हूँ मैं, उससे अलावा कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है ना. तो डेवलप कैपेसिटी टू एलिमिनेट, ये भी टॉपिक से नहीं आता है, ये भी इधर उधर से आता है. जब सारे टॉपिक्स पढ़ोगे ना, थोड़ा थोड़ा एक जनरल अवेयरनेस होगी तो लग जाता है, दिल बोलता है, पता नहीं क्यों. एग्जाम में भी बोलता है, एग्जाम से बाहर तो बोलता ही है, ठीक है, वहाँ तो बोलता ही रहता है, लेकिन जो एग्जाम में बोलता है ना, वो भी सच बोलता है, बाकी जगह धोखा देता है हमें. एक ही जगह है जहाँ दिल सच बोलता है, वो कौन सी जगह है? एग्जामिनेशन हॉल. वहाँ जो बोले वो अच्छा लगता है. तो इस तरह से एक और हिस्ट्री लिखी गई थी, कॉन्टेक्स्ट वाइज लेट मी टेल यू, दैट इज कॉल्ड राज तरंगिनी. Such additional details you can write on the margins. And this was written by Kalhan, and this deals with the history of Kashmir. And when such books are written, you place them in inverted commas and underline them. This is the formal way of writing the names of textbooks. And this book was completed in the 12th century. Which book? Raj Tarangini. This is context wise I am telling you, because we are talking about Chachnama, which is part of the same. So Chachnama deals with the history of Sindh, and Raj Tarangini deals with the history of Kashmir. And this book was completed, इसके बारे में हमें ज़्यादा पता है, during the reign of Harsha, and not the Harsha of Kannauj, but a ruler of Kashmir whose name was Harsha. इन डिटेल्स को ना ऐसे ही बॉक्स में डाल लेना, जैसे बॉक्स मैं बना रहा हूँ. ये बॉक्स है, अफ्रीका बन गया इंसिडेंटली. ऐसा ही है ना अफ्रीका?
Then write Dahir was, Sindh was annexed. Sindh was annexed, and the Arabs continued to rule. Sindh was annexed, and the Arabs continued to rule over it for the next 200 years. For the next 200 years before before being replaced by the Karmathians. Before being replaced by the Karmathians, a dynasty of local converts. A dynasty of local converts. The Karmathians in due course of the time, the Karmathians in due course of the time, Karmathians in due course of the time came to be destroyed by Mahmud Ghazni. Came to be destroyed by Mahmud Ghazni. So this is the sequence: Sindh, Arabs, Dahir, Arabs, Karmathians, Mahmud Ghazni, then his descendants Muhammad Gori, his descendants replaced by Muhammad Gori, and then we know Delhi Sultanate and all. Then change your paragraph and write. See, we are not going to talk about the conflict details. We know what happens in battles. We know what happens in invasions. So history does not count heads, Heads, how many people were killed. Getting this idea? History talks about something else. That is, what kind of changes took place. ठीक है ना? So, in more interesting history books, you will find the description of the whole course of his advancement up the river Indus, the place where he crossed the river Indus, and all the battle details. I don't think that UPSC is going to ask you those battle details, and that too in GS. ठीक है ना? When history used to be an optional subject, even in PT, even at that time, this kind of details were not asked कि पहले कहाँ invasion किया, फिर बाद में कहाँ invasion किया. So we are interested in outcomes in history. We are not interested in battles unless until we are dealing with what we can say the history of military technology or the history of military strategies. UPSC आमतौर पे ऐसे सवाल नहीं पूछती है, तो छोड़ देंगे हम उसको, बैटल डिटेल्स में नहीं जाएंगे. So let us talk about the outcome, what happened. I think we पहले के ज़माने में जब थोड़ा एनालिटिकल क्वेश्चंस कम पूछते थे, फैक्चुअल ज़्यादा होता था, हालांकि वो भी समझ का फेयर था, तो दिस मच सफिशिएंट होता. लेकिन मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंसेस की भी बात करेंगे हम लोग. ठीक है ना? सो वी नो द इन्वेजन, वी नो व्हाट हैपेंड. अरब came under their influence and ruled by them for 200 years. Now change your paragraph. We are going to talk about the causes and consequences. More important are consequences. On causes and consequences, we understand that historians are not going to agree. अलग अलग assessment होगा, अलग अलग बातें करेंगे वो, लेकिन फिर भी हमें क्या करना. देखिए पहला पॉइंट, ऐसा मत लिखिए, लिखा आपने, हेडिंग बनाया causes, लिखिए कि the Arab invasion on Sindh. The Arab invasion on Sindh is explained. The Arab invasion on Sindh is explained in terms of the following factors. In terms of the following factors. Write the first one. Imperial
ambitions, imperial ambitions. So Arabs had established their empire. Like any other empire, this empire was also desirous of territorial expansion, and Sindh was a contiguous zone area. So imperial ambitions, that is the first thing. But in history, motives are very complex, and we have multi-factor analysis. So why are you preparing for civil services? Can you say only one thing about it? नहीं बोल सकते ना, इसीलिए किया, इसीलिए कर रहे हैं. हो सकता हो अभी जो सोच रहे हो 10 साल के बाद सोचो कि ये तो बेवकूफ़ी थी. हो सकता हो कि आईएएस करने का मकसद आईएएस बनने के बाद मिले. अभी आपको लग रहा है ना आईएएस बन के ये करेंगे वो करेंगे. हो सकता हो कि 10 साल सर्विस करने के बाद आपको अपना मकसद मिले कि अच्छा तो दैट वाज द रीज़न, इसलिए मैं, हो सकता है रिटायरमेंट के बाद मिले. लाइफ का मकसद तो कभी भी मिल सकता है नहीं. तो ह्यूमन मोटिव्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड अबाउट हिस्ट्री पीपल टॉक सो ऑथेंटिकली एज इफ दे वर स्टैंडिंग देयर एंड दे वर द वंस हु टुक द डिसीजंस. ठीक है ना. जितनी हम हिस्ट्री जानते हैं हमें पता चलता है कि हम जितनी जानते हैं वो बहुत कम है और जितना नहीं जानते वो बहुत ज़्यादा है. So more and more knowledge of history is also what we can say expansion of the domain of ignorance. That is more and more knowledge of our ignorance, कि हम कितना नहीं जानते हैं. तो हम जितना जानते हैं वो बहुत कम है, ठीक है, और जो नहीं जानते हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो जानते हैं दैट टू, ठीक है, वो रियलिटी के कितना करीब है कितना करीब नहीं है, दैट इज ऑल्सो डाउटफुल. So as a wise man, as educated man, we should know the limitations of all the disciplines. We should also know the limitations of history. Here we can't have those kind of coherent theories which we find in other disciplines, because here the nature of knowledge is such which is too remote, too indirect, and too doubtful. Getting this? So that's why in history we just have conjectures. No truth is truth in history. In history we do have historical truths, the truths which are established by historians. And that's why you must be knowing that this discipline always remains a quite controversial. तो बहुत कुछ ऐसा है हिस्ट्री में जो कभी हो सकता हो ही नहीं. ऐसे भी नो कि इन इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वर टेराकोटा फिगरिन्स, and we conclude that the Indus inhabitants were idol worshippers. Don't you think we have planted our impulses upon them? The Vedic Aryas were not idol worshippers. So being idol worshipper was not a condition कि इंडिया में हमेशा से था. तो हो सकता हो कि उनके सोल्स, किनके सोल्स, इंडस इनहेबिटेंट्स के, पीपल से कि आवर बॉडीज डाई नॉट द सोल्स. सो सिविलाइजेशन केम टू एन एंड, द इनहेबिटेंट्स आर नो लॉन्गर living today, but maybe their souls living in the heaven and looking at us and calling us fools. अरे बेवकूफ़, ऐसा कुछ भी नहीं था जितना तुम लोग सोच रहे हो. उतना तो हमने भी नहीं सोचा था जितना तुमने हमारे आर्टिफैक्ट्स को देख के सोच लिया. हो सकता है, ऐसी बात हो सकती है कि नहीं. तो कभी कभी हिस्ट्री पढ़ते वक्त हम उतना सोच लेते हैं जितना शायद the actors and the players who were shaping the course of history themselves may not be aware of. क्योंकि we have a tendency to plant our impulses, our awareness upon the past. So discipline बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है. और जब इस डिसिप्लिन को समझ लेंगे ना तो जितनी भी कंट्रोवर्सीज होती हैं और हिस्ट्री को लेकर जो इमोशनल होते रहते हैं, देखिए ऐसा हो रहा है ऐसे हो रहा है, कोई इमोशंस नहीं आएंगे. सब लगेगा सब ठीक है. हिस्ट्री टीचेज अस टू बी कूल, काम, लुक एट मी एंड व्हाट, इम्पैशनेट अबाउट द वर्ल्ड इन विच यू आर लिविंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा फिर महसूस लगेगा कि दिस इज नेचुरल, ये तो होता ही रहता है. दिस इज हाउ द हिस्ट्री डिसिप्लिन इज. हिस्टोरिकल ट्रूथ्स वर ऑलवेज डाउटफुल. फिर ना तो आपको गुस्सा आएगा ना प्रेम आएगा, कुछ नहीं होगा. देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स. इसलिए कि सो लॉन्ग एज यू आर इमोशनली चार्ज यू कांट एंजॉय थिंग्स. इफ यू आर एंजॉइंग द इमोशंस देमसेल्व्स, दैट इज अनदर इशू. तो यहाँ पर मोटिव्स को लेकर भी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं.
ठीक है, जो 4 थियरीज हिस्टोरियंस ने बनाई है उसको लिख लेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग कुछ कर सकते नहीं। सेकेंड पॉइंट लिखिए, रिलीजियस zeal, religious zeal, ZEAL, religious zeal, that is a desire to spread Islam, that is a desire to spread Islam. Islam was a proselytizing religion. They wanted new followers, they wanted new areas too, and so they invaded, and those cultures which were quite weak, like modern imperialism, like the civilizations in Latin America and other continents, they were simply destroyed. But those civilizations who had capacity to resist, Arabs had to come on certain terms and conditions with them, simply because they could not destroy them like others. So Sindh provides a very good example of the Arabs. Earlier they had come in contact with the Persians and they had adapted themselves. Even Persians had adapted themselves to the new challenge, though the Arab-Persian conflict is something which is still continuing. So likewise, now Arabs are encountering as invaders or as rulers the Indian subcontinent with such a strong civilizational roots. So naturally, Indians could not have been destroyed or completely eliminated. So they needed to change their approaches. So we are going to take note of all these things as part of consequences. Then write third. Third you write. And see, invasion and act of aggression at times requires moral justification. And here the role of ideology. किसी को मारना आसान काम तो नहीं होता, किसी के घर में अटैक करना, उसकी प्रॉपर्टी लूट लेना, चोर कहलाएंगे आप. But when the same is done by the state, that is war booty. The collective violence, legitimate violence, accepted. What is prohibited? Morally, legally, more is the violence committed by one person against another. But when everyone becomes violent, perhaps violence is legitimized. What do you think? ऐसा होता है? We have moral teachers, moral preachers who keep on talking about non-violence. But what is the position of non-violence in operation? We do become violent at times. आप में से हुए हैं? कितने लोग violent हुए हैं? उस फिल्म को देखने के बाद तो और हो गए होंगे. एक डायलॉग मुझे ऐसे ही दिमाग में फ्लैश पॉइंट की तरह गुजरा, ये मत करो नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ था. क्या किसी को याद है डायलॉग? बोल दो, बोलो. याद है? नहीं याद है? क्या मत करो नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ था. हाँ, साइलेंट हो जाओ. अच्छा, साइलेंट हो जाओ नहीं तो मैं वायलेंट हो जाऊंगा. हाँ, अब चलिए ठीक है. तो आइडियोलॉजी चाहिए होती है विच जस्टिफाइज योर एक्ट ऑफ एग्रेशन, एक्ट ऑफ लूटिंग, प्लंडरिंग, एक्ट ऑफ मर्डरिंग, किलिंग, बुचरिंग. ठीक है. और जब तक इम्पर्सनल लॉयलिटी ना हो तब तक लोग आपके साथ क्यों आएंगे? पर्सनल लॉयलिटी के बेसिस पर कितने लोगों को साथ में जोड़ सकते हो आप? रिश्तेदार वो तो हमेशा बेवफा होते हैं, वो तो आएंगे नहीं. फ्रेंड्स बेवफाई के लिए ही जाने जाते हैं. तो पर्सनल लॉयलिटी हैज लिमिटेशंस. And if collective enterprises is to be taken on such a large scale, there must be some binding thread, binding ideology, which unite people, which give them something more than what can be perceived as personal, and that is what impersonal. So naturally, Islam as an ideology was going to serve the same purpose. Whatever they are doing it for a just cause, and the just cause is spreading the Islam. So they are not looting, they are not plundering, they are spreading Islam. Actually, they were interested in loot and plunder. But justification. Politicians have always used religion as a justification. It does not mean that a state has served the cause of religion. Even if a state has occasionally served the cause of religion,
देयर मस्ट हैव बीन पॉलिटिकल मोटिवेशन. रूलिंग क्लासेस कभी के भी रहे हों, चाहे मॉडर्न या मेडिवल या एंशियंट, वो बेवकूफ़ नहीं होते. देयर प्राइमरी इंटरेस्ट इज व्हाट? टू रूल अदर्स. एंड हाउ टू रूल अदर्स? तो जैसा वक्त रहा उसके हिसाब से उन्होंने ये चीज़ें की. वन थिंग इज क्लियर कि रिलीजन हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी important source for power and influence, something politicians are interested in. So politicians of all ages have used religions, religious ideology for acquiring power and influence. That is the business of a politics. So something similar was now being done by the new rulers. Is this position clear? So even amidst what we can say religious symbols and religious slogans raised by both the parties, we can identify some interests which may not be acknowledged, but they are the actual driving forces. आज कोई वार्ड मेंबर का चुनाव जीत जाता है, बोलता है ना धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई. अबे तू जीता है, ठीक है, तू कौन सा धर्म है, तू कौन सा असत्य है. तो वी ट्राई टू प्रेजेंट थिंग्स इन रिलीजियस टर्मिनोलॉजी. उससे क्या होता है, उसकी जस्टिफिकेशन हो जाती है कि नहीं. जो जिस दिन आप आईएएस बनेंगे उस दिन धर्म की स्थापना होगी कि नहीं. द ट्रुथ विल ट्रायम्फ, ऐसे बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, सत्य की जीत हुई. सत्य यही था कि आप मेहनती ज़्यादा थे दूसरों से, उसकी जीत हो गई, तो धर्म की जीत हो गई कि नहीं. सो symbols, slogans, religious symbolism, political motives, all these things are very complex. So we don't have to be emotional about them. Is this position clear? Religion used for political purposes, politics also at times serving the cause of religion, if that is part of a larger what political game. Otherwise ruling classes most of the time preoccupied with their concern. So religion has served the state has not served the religion most of the time. Then third factor you write. थर्ड लिखा आपने. अब हमारे जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस हैं वो इस थर्ड को बताएंगे कि दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए कि दे कंसीडर इकोनॉमी टू बी द बेस एंड इकोनॉमिक मोटिव्स टू बी द प्राइमरी मोटिव्स. So that is what commercial importance of Sindh, right? Commercial importance of Sindh. Indus River was important, Sindh was important, and commercial motives, and Arabs were traders. So they wanted to occupy Sindh because they were interested in the river Indus. River Indus was going to provide them greater access to the areas of Central Asia. So that may be the reason. So those people who pay more attention to ideology, they say that the spirit of Islam. Those people who pay more attention to material interest, they say commercial. And there are some other people also who talk about badla. Do you know what is badla? Badla is revenge. लिए हो कभी किसी से बदला? कभी नहीं. ले ही नहीं पाए, या मौका नहीं मिला, या मतलब जरूरत नहीं पड़ी. जरूरत नहीं पड़ी. इंतकाम नहीं लिया कभी किसी से. तुमने मेरा अच्छा रूप देखा है, अब तुम मेरा वो वाला रूप देखोगे, ऐसा कुछ नहीं बोला कभी इस तरह का डायलॉग. नहीं नहीं, ऐसा नहीं. तुमने मेरी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी, ऐसे नहीं बोला कभी किसी को. कितनी बोरिंग लाइफ जी रहे हो, पहले इस लाइफ के बारे में सोचो. तैयारी तो छोड़ो, वो तो होती रहेगी, ठीक है. ऐसी भी कोई लाइफ होती है जिसमें कोई दुश्मन नहीं, कोई बदला नहीं, कोई इंतकाम नहीं, ठीक है, कोई इंतकाम की आग में नहीं जल रहा, ठीक है. ये एक तपिश होती है ना, लगनी चाहिए आग, जरूरी होती है. नहीं, चलो पड़ोसियों से नहीं बदला लेना, आईएएस बन के इनकाउंटर नहीं करना किसी का. ये सारे मोटिव्स नहीं है आपके, है ना. इनकाउंटर है ना, कोई आ रहा है दिमाग में, आ रहा है, जैसे मैं बोलता हूँ जैसे आईपीएस हो जाओ, इनकाउंटर करना है, कोई एक आदमी दिमाग में जरूर आ रहा होगा. लाओ उसको. कोई आ रहा है, इनकाउंटर करना है किसी का, आ गया कोई, आया ना, उसी का नाम लिख लो. चलो कुछ भी रहे. अच्छा, इसमें कितने लोगों ने मेरा नाम लिखा है? मैंने एक तो आधा घंटा देर से आए, ऊपर से प्रवचन दिए, ठीक है, ऊपर से पढ़ा कम रहे हो, मजाक किए जा रहे हो, हमारे जज्बातों से खेल रहे हो, बदला लेने को सिखा रहे हो. कितने लोगों ने मेरा नाम लिखा? लिखा किसी ने? किसी ने नहीं लिखा. मैं मतलब मैं भी बोरिंग लाइफ ही जी रहा हूँ. तो फोर्थ
fourth point is, right, an act of revenge against, an act of revenge against, okay, don't write against, right, an act of revenge for an act of piracy, Piracy. Is the spelling correct? An act of piracy against an Arab ship, act of piracy against an Arab ship committed near the coast of Sindh, committed near the coast of Sindh. The Arabs demanded compensation. The Arabs demanded compensation, which Dahir refused, or Dahir had refused. ऐसे लिखिए, Arabs demanded compensation, which Dahir refused. So today you must be knowing that we have concepts like territorial waters और पता नहीं क्या 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 क्या. ये मॉडर्न एज में ना इस तरह के लॉज डेवलप हुए हैं ना, इंटरनेशनल लॉज. मेडिवल और प्री मॉडर्न सोसाइटीज में तो ऐसे लॉज नहीं थे. सो हु विल डिसाइड कि व्हाट इज द एरिया और व्हाट इज द jurisdiction of, or what had been or what was the jurisdiction of Sindh? It had been committed near the Sindh, but Dahir was quite right in his explanation that I have no control over the pirates and also no duty to police those areas. So I am not liable to pay the compensation. लेकिन इस तरह के जब आर्गुमेंट्स होते हैं और कोई मिलिटरली वीक हो, तो जो मिलिटरली साउंड होता है ना उसको समझ में नहीं आता है. योर अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स अपॉन योर पोजीशन, योर लोकेशन. देखा होगा आपने, कभी कभी तो कोई समझाते रह जाता है, आप नहीं समझते, और कभी कभी किसी को अपनी गरज से समझते हैं. या आई अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, but there are so many things that you have not understood and you are not interested in understanding. It all depends upon your location. जब आप सबऑर्डिनेट पोजीशन में होते हैं, ठीक है, तब समझने की जिम्मेदारी आपकी होती है, और जो डोमिनेट करता है समझाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं होती है. वो गलत समझ सकता है, बल्कि आप ये समझने की कोशिश करोगे कि उसने गलत क्यों समझा मुझे, इतनी अंडरस्टैंडिंग दिखाओगे आप. इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पावर. तो आपकी सही चीज़ को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, आप उसकी गलत चीज़ को भी आप खुद जस्टिफाई, नहीं नहीं इतना बुरा नहीं है, लेकिन ये वजह थी, नहीं नहीं गलती मेरी ही थी. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पावर इक्वेशन, पावर रिलेशन. तो दिस आर्गुमेंट मे बी वेरी साउंड आर्गुमेंट, बट दैट वाज नॉट लिसन टू बाय द अरब्स, द एक्सपेंडिंग imperial powers and the new enthusiasts of what we can say spreading an ideology that was religion Islam. Is this position clear? Then change your paragraph and write. At the Arab invasion on Sindh, the Arab invasion on Sindh and the subsequent rule of the Arabs on Sindh, came to be associated with, or are generally associated with, या came to be associated with the following, FOLLOWING, following consequences. ठीक है. देखिए पहला, किससे शुरू करना चाहेंगे आप? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशियो कल्चरल. वी हैव 3 मेजर डायमेंशंस.
इकोनॉमिक्स से शुरू करना चाहेंगे? मार्क्सिस्टों, इकोनॉमी इज द बेस, ये सोच रहे हो आप? इकोनॉमी से शुरू करना चाहो, पॉलिटी से करना चाहोगे? कौटिल्याज ऑफ दिस क्लास दे वांटेड टू बिगिन विथ इकोनॉमी. कोई नहीं है जो सोशियो कल्चरल से शुरू करना चाहे. टू civilizations were meeting, and this meeting can be through conflict and through cooperation both. Whatever be the case, there is something that is called syncretic tendencies, process of cultural exchange, that continues and it does not depend upon our relation. In short, हम अपने दुश्मन से भी सीखते हैं. Do you think we learn also from our enemies? मैं पहले ऐसा नहीं था, अब हो गया हूँ. क्यों? I have been transformed by the people whom I don't like. लोगों ने इतना झूठ बोला मुझसे कि मैंने सच बोलना छोड़ दिया. मैंने भी सच बोलना छोड़ दिया. ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग. ठीक है, that is presenting themselves as victims or as defenders but becoming more offensive than offenders. ऐसा होता नहीं, पता नहीं, आई डोंट नो. लेकिन सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन, चाहे वो कन्फ्लिक्ट के जरिए हो या चाहे कोऑपरेशन के जरिए, इट रिजल्ट्स इन सिंक्रेटिज्म, synthesis, composite culture. So when the Aryas came, though we don't accept Aryas coming to India as invaders now, but Aryas of course had conflicting relation. We have many instances, conflicting relation with the non-Aryan people. They also have cooperative relation with the non-Aryan people, and even in the ancient time we have growth of a composite culture that finds reflection in the Atharvaveda, in which we not only have Aryan but also non-Aryan elements. So nature of relationship is not important. What is important is coming in a contact. Is this question clear? तो दोस्तों से भी सीखते हैं, और जब इस तरह की कोई बड़ी बात होती है तो उसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं. कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, कोऑपरेशन भी हो सकता है. कभी कन्फ्लिक्ट डोमिनेट करेगा, कभी कोऑपरेशन डोमिनेट करेगा, और कभी दोनों के अंडर करेंट्स एक ही सिचुएशन में चलते रहेंगे. ऐसा होता है कि नहीं होता? हो सकता है कि नहीं? क्या लगता है आपको? वहां से देख के बताओ, मैं दिख रहा हूं ना कैमरे में? अरे ऊपर देखो कैमरे में, ऊपर ऊपर दिख रहा हूं ना? ठीक ठीक ठाक दिख रहा हूं बैठने के बाद भी? हाँ ठीक, चलो थैंक यू. तो एक्चुअली ना मेरी हाइट थोड़ी कम है, तो कभी कभी मैं जब बैठता हूँ तो वही चीज़ें दिखती हैं जो एक्चुअली मैं कभी दिखाना नहीं चाहता, या नहीं चाहता कि कोई देखे. और आप समझ सकते हैं वो क्या है. अब आप सोचो कि अगर टॉप पोजीशन दिखता है सिर्फ अपर पार्ट ऑफ माय हेड, तो क्या दिखेगा लोगों को बताओ? टकला कहते हैं उसको शायद. तो बाकी लोग बैठ जाते हैं तो ठीक है ना, लेकिन मैं बैठ जाता हूँ तो सिर्फ यही दिखने लगता है. इसलिए आई एम मोर माइंडफुल ऑफ ऑल दिस थिंग्स. ठीक है, तो मैं आमतौर पे बैठता नहीं हूँ, लेकिन आज बैठ के मैंने तभी पूछा आप लोगों से, थैंक्स फॉर दिस कॉपरेशन. तो ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ इतना दिख रहा है. अगर सिर्फ इतना दिखे तो लगेगा कि दिस इज द सिंध विच वॉज रूल्ड बाई अरब्स, द डेजर्ट. सिंध वॉज ऑल्सो डेजर्ट, नो? हो सकता है. सो लिखिए, इकोनॉमी से ही शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं. रिवाइवल ऑफ इंडियाज ट्रेडिंग लिंकेजेस. Revival of India's trading linkages with the Arab world. You know Al-Biruni talking about closed-mindedness. So revival of India's trading linkages with the Arabs. And that was mainly through land routes, because through sea routes it was already there at its peak. Clear? And breaking up of अंग्रेजी ठीक है ना? Breaking up of Indian isolation. India's relative isolation. India's relative isolation. Because by this time we have early medieval time, and India's trading connection with Roman Empire had declined, and India's exchange network was
collapsing. We have talked about the India's Indian feudalism. Clear? Then write second point. New methods of DESERT. New methods of DESERT. क्या होता है ये? Desert cultivation. And write this without looking at me, even without thinking of me. ठीक है? New methods of desert cultivation. कर लिया आपने? फिर उसके बाद क्या लिखोगे? क्योंकि वो उसी इलाके से आए थे, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ सिंध इज डेजर्ट. देन राइट डेट कल्टीवेशन. DA डेट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? देखो दो होते हैं, एक खाते हैं और एक पे जाते हैं. ये खाने वाला डेट, खजूर कहते हैं जिसको. क्या डेट कहते, क्या कहते हैं इसको? डेट मतलब लंबा खींच के बोलते हैं. और वो वाला क्या है, उसको क्या कहते हैं? वो शॉर्ट होता है. हाँ, उसको भी तो डेट ही कहते हैं. एक ही तरह से बोलते हैं ना दोनों को. हाँ तो ठीक है, फिर ऐसे क्यों देख रहे थे मुझे जब मैंने डेट कहा तो? ठीक है, चुपचाप समझ लिया करो. ठीक है, कल्टीवेशन की बात हो रही है. ठीक है, तो डेट कल्टीवेशन, खजूर ही कल्टीवेट होता है. डेट कल्टीवेशन. फिर लिखिए लेदर टैनिंग. लेदर टैनिंग, कैमल लेदर टैनिंग. टैनिंग समझते हो ना, जो हमें भी हो जाती है कभी कभी जब धूप में निकलते हैं. कुछ लगा के निकलते हैं हम लोग शायद. हाँ, कुछ कुछ होता है. अभी मत पूछना मुझे कैसे पता. ठीक है, तो अब लेदर टैनिंग वो वाला नहीं, वो स्किन टैनिंग है. लेदर टैनिंग ऊँटों का, घोड़े का. ठीक है, अरब्स वर क्वाइट एक्सपर्ट इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. फिर लिखिए नेक्स्ट. डू यू नो समथिंग दैट इज कॉल्ड carpet weaving? Right, carpet weaving. Carpet weaving, WEAVING. Carpet weaving. Don't you think Arab people, Arab civilization has some very close relation with carpet? The moment we think of Arabs, we think of carpets. ऐसा होता है ना. Carpet weaving पुराने सीरियल्स वगैरह में भी दिखाता था ना. हाँ, फिर उसके बाद से लिखिए new coins, that is coinage system. New coins. अब शिफ्ट कर लेते हैं सोशियो कल्चरल. देन राइट इमरजेंस ऑफ अ न्यू कम्युनिटी. इमरजेंस ऑफ अ न्यू कम्युनिटी. इमरजेंस ऑफ अ न्यू कम्युनिटी of the followers of Islam. Of the followers of Islam. New community of the followers of Islam. In bracket you can write Muslims. We can have other names also, but Muslims write. And the beginning of the process of the beginning of the process of the development of beginning of the process of the development of the composite culture. Development of the composite culture of the medieval time. Composite culture of the medieval time through both conflict, conflicts and cooperation. Through both conflict and cooperation. Clear? Then write next. Next you write socio-cultural. See, this composite culture is something very important in the medieval time in Indian subcontinent. Indian culture has always been a composite culture. The cultural diversity we notice in the civilization, syncretic tendencies are always at work. So now we have a new dimension being added to the India's cultural diversity.
Clear? Then write next. Next you write spread, S-P-R-E-A-D, spread. Spread of what? You, नहीं वो तो है, तभी तो आपने लिखा है कम्युनिटी ऑफ मुस्लिम्स. दैट वाज थ्रू कन्वर्जन, थ्रू माइग्रेशन. ठीक है ना? तो एट द टाइम व्हेन द अरब्स वर स्प्रेडिंग their religion and trying to spread their religion, India was spreading its knowledge, wisdom, its decimal system, its zero, its numerals. पढ़े हैं ना ऐसी चीज़ें? And Arabs were interested in all these things. At that time, Arabs were inspired by rationalist ideas. We call them Mutazilites. So they took interest in knowledge everywhere. You must be knowing that even Greco-Roman traditions came to be preserved by the Arabs. So many thinkers, many philosophers, many scholars of Greco-Roman traditions forgotten by the Europeans themselves, remembered by the Arabs, because they had taken interest at one point of time in their history in knowledge everywhere, that is across the world, including the Indian knowledge. So India, a spread of Indian knowledge, because now the Arabs were exposed to Indian knowledge. Or we have some caliphs, or the emperors we can say, who took particular interest in translating Indian texts into Arabic. We don't have example of any foreign text at this time being translated into Sanskrit. Perhaps that's why Megasthenes and his perception seems to be quite convincing when he says that Brahmanas were not interested in knowing about others, and they thought that they are the best, and they had a sense of cultural arrogance and self-complacency. I think these things we have written. ठीक है ना? So we don't have any example, but Arabs were interested in Indian knowledge, Indian wisdom, ठीक है ना? And they translated many Indian works into Arabic. At Baitul Hikmah, that was house of wisdom, established by some caliphs like Harun Rashid Al Mamun. ये कहीं अलग से नहीं बता रहा हूँ, एनसीईआरटी सती चंद्रा में लिखा हुआ है. ठीक है? एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई होंगी ना आपकी, जो देने जा रहे हैं, जो नहीं देने जा रहे हैं? चलो ये अधूरापन तो रहेगा ही. अधूरापन कहते हैं इसको, इनकम्प्लीटनेस रहेगी, टेंशन मत लो. लेकिन जब भी मौका मिले भटकने का, बहकने का, और जब भी समझ में ना आए कि अब क्या करें, तो गो बैक टू एनसीईआरटीज, गो बैक टू क्लास नोट्स, एंड इफ यू अंडरस्टैंड देम वेल. बहुत लोगों ने सिर्फ उन्हें भी पढ़ के क्वालिफाई किया. बहुत लोगों ने इधर उधर देखा ही नहीं, आए क्लास नोट्स पे फोकस किया, उनका सॉफ्टवेयर मैच कर गया होगा, निकल गया. ऐसे भी होता है. बहुत लोग तो झूठ बोलते हैं. क्वालिफाई करने के बाद हम उन्हें बुलाते हैं ना, आके बताओ, लोग झूठ भी बोलते हैं. ये सिलसिला नया जो शुरू हुआ है, ये साउंड बहुत इरिटेटिंग होती है, नहीं लगता आपको? चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखते रहो. मैं आपको सुनने ही नहीं दूंगा इस साउंड को. चलो लिखो अब. इधर ध्यान भटका रहेगा. क्या लिख रहे थे? स्प्रेड ऑफ इंडियन नॉलेज आउटसाइड इंडिया. Spread of Indian knowledge outside India. That is both Arab and Europe. Both Arab and Europe. The Arabs were now exposed to. The Arabs were now exposed to the Indian knowledge and wisdom. उनको विजन के नोट्स भी मिल गए थे अब. The Arabs were now exposed to Indian knowledge and wisdom contained in, contained, contained in the Indian classical texts, contained in the Indian classical texts, which came to be translated into Arabic. Indian classical texts which came to be translated into Arabic.
translated into Arabic under the aegis of AEGIS होता है ना, under the aegis of बैतुल हिकमा, बैत उल हिकमा और हिकमत, both way we can write बैतुल hikmah, in bracket you write a house of wisdom, house of wisdom. I think we have discussed it while discussing Al-Biruni. किया था वैसा कुछ नहीं ना, कोई बात नहीं. हाउस ऑफ विजडम established by the caliphs like Arabic name very complex, so छोड़ दीजिए, छोटा छोटा नाम लिखिए. Established by the caliphs like Al Mamun and Harun Rashid. Harun al-Rashid, Harun Rashid, right, simple name. Harun Rashid. Al-Mamun and Harun Rashid. Clear? At Baghdad. Baghdad is a place you must be knowing. Iraq. At Baghdad. At this time, Baghdad was the center of the caliphate. Then write, some of these translated works are, I think this is more important for us, some of these translated works are mentioned below. Some of these translated works are mentioned below. तो आखिर हमारे डेसिमल के बारे में कैसे पता चला उन्हें, हमारे साइंटिस्ट्स के बारे में कैसे पता चला. लिखिए पहला, आर्य भट्टिया, एक किताब का नाम है ये, एंड हु इज द ऑथर, आर्यभट्ट. Aryabhatiya was translated by them. And when Aryabhatta is being translated, I hope understand how many things they can know about India. रोटेशन अर्थ का, ठीक है, आपको पता है ना, बहुत सारी मॉडर्न साइंटिफिक थियरीज भी हमें आर्यभट्ट में दिखाई देती हैं. जीरो का नाम सुना है कभी आपने? जीरो, डेसिमल सिस्टम, ब्रैकेट में लिख लीजिए, जीरो डेसिमल सिस्टम, जीरो डेसिमल सिस्टम, रोटेशन ऑफ अर्थ, इंडियन न्यूमेरल्स, न्यूमेरल्स ही बोलते हैं ना, NUMERALS, इंडियन न्यूमेरल्स. इसको हिंदशा कहते हैं अरबिक में, इवन टुडे, हिंदशा, दैट इज कमिंग फ्रॉम हिंद, दैट इज इंडिया, हिंदशा. ग्रीको रोमन लोगों का जो कैलकुलेशन का सिस्टम था ना, न्यूमरल्स को लिखने का सिस्टम था, आपको लगता नहीं है कि वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था? मोर कॉम्प्लेक्स. कैसे? अगर लिखना हो 10 × 10 तो क्या हो गया, कैसे करोगे? 16 नहीं 14 हो गया ये. 14 × कितना? 16 करके दिखाओ. कितना लंबा लंबा लिखना पड़ेगा सोचो. हमारे यहाँ क्या है, कुछ नहीं करना, 1 2 3, एक और एक है 0, बढ़ाते जाओ 0. तो ये बहुत ही कन्वीनियंट था लिखना पढ़ना, एंड टुडे इंटरनेशनली एक्नॉलेज्ड. ऐसा है कि नहीं, ग्लोबल लेवल पे ऐसा ही सिस्टम है ना. देन राइट 2 more books, and they are also on science, but here science is a little, what we can say, mythologized. बराह मिहिर का नाम सुना होगा आप, राइट. बृहद जातक, लघु जातका, बृहद जातक, लघु जातक. These are the works of बराह मिहिर, अनदर एंशिएंट इंडियन साइंटिस्ट. आजकल तो नाम देके भी सवाल पूछ रहे हैं ना, बराह मिहिर, ठीक है, WSK, और कौन, कोई एक और क्या थे,
तो आंसर में क्या होगा? ए बी सी डी। ए होगा टीचर्स, बी फैकल्टीज, सी साइंटिस्ट्स, डी इलेक्ट्रिशियंस। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट आंसर? तो साइंटिस्ट हो सकते हैं, सब हो सकते हैं। इलेक्ट्रिशियन थे क्या वो? थैंकफुली यूपीएससी हमें इतना डिफिकल्ट ऑप्शंस नहीं देती है, वरना क्या होता हमारा, नहीं? तो बराह मिहिर not as scientific in his temperament as Aryabhat, but like Aryabhat, he too is acknowledged as a great Indian scientist, and his two works are particularly noticeable, and both of them translated by the Arabs. ठीक है ना? Then right next. Do you know a book that is called Charak Samhita? Who is the author of Charak Samhita? Charak. And what about Sushruta? Who is the author of this? Sushrut. And both of these gentlemen, one physician, another surgeon, lived in the court of ancient ruler Kanishka. Kanishka का नाम सुना होगा आपने? Kanishka belonging to which dynasty? Kushana dynasty. Kushana dynasty. Kanishka, who ruled in the 1st century AD, extended patronage to Charak and Sushrut, and their books known as Charak Samhita and Sushrut Samhita also translated by the Arabs. तो हमारा साइंस ले गए, हमारा मेडिकल साइंस भी ले गए। आज भी देखा होगा आपने, देयर इज अ सिमिलरिटी बिटवीन इंडियन आयुर्वेदा एंड व्हाट यूनानी एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड आयुष, नाम सुना होगा आपने? आयुष, AYUSH। आखिर इनको एक साथ क्लब टुगेदर क्यों कर दिया गया? यूनानी, अरबिक इसमें भी है, आयुर्वेदा भी है कि नहीं? सब तिब्बिया, तिब जिसे कहते हैं, सब में सिमिलरिटी है। सम बेसिक एजम्पशंस आर शेयर्ड। सो इफ वी टेक नोट ऑफ मेडिकल साइंसेज इन द ईस्ट, ईस्ट का मतलब है एशिया, एंड द वेस्ट दैट इज यूरोप। एशिया, सो फ्रॉम टर्की टू इंडोनेशिया, उधर जाते हैं ना जब इंडोनेशिया मलेशिया, तो उधर बुद्धिज़्म और तिब्बती थेरेपी मशहूर हो जाती है। लेकिन ये अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट से लेकर आप चले जाओ कहाँ तक, अनातोलिया, टर्की तक, तो ये एक वास्ट पीस ऑफ लैंड है कि नहीं, वहाँ से यहाँ तक, दिस इज द ईस्ट। इसी में से अरब पेनिनसुला भी निकला है उधर। तो यहाँ पर ना देर इज अ सिमिलरिटी, कल्चरल सिमिलरिटी इन टेक्नोलॉजी ऑल्सो। इवन द अशोकन पिलर्स हैव सम सिमिलरिटी, some ideas, some gods, their names are also similar. So our medical science is also very similar. तभी तो इनको एक साथ आयुष के तहत रख दिया गया है। उसके बियॉन्ड जाने पर, या फिर ये कहो कि मॉडर्न टाइम में समथिंग डिफरेंट took place, and that is allopathic. So then right, there is one more book. Have you ever heard of Panch Tantra? Who is the author of Panch Tantra? Vishnu Sharma. There is a very, and this is a work on what is called BEAST, Beast, FABLES, Beast Fables. ये Beast Fables क्या होता है? मोरल स्टोरीज बच्चों के लिए, आप जैसे जो बच्चे होते हैं ना, इनकी मोरालिटी को रेज करने के लिए, ताकि उनका पेपर अच्छा हो इथिक्स का। पंचतंत्र पढ़ाना चाहिए हम लोगों को, क्या लगता है? बीस्ट फेबल्स, इम्पार्टिंग मोरल स्टोरीज, इम्पार्टिंग मोरल टीचिंग्स और मोरल प्रीचिंग्स। फिर एक और लिखिए, नाम मत पूछिएगा, भूल गया हूं मैं, खुद से ढूंढ के कहीं लिख लीजिएगा। किताब का नाम जान लीजिए कि दैट वाज ट्रांसलेटेड, एंड दैट इज अष्टांग
हृदयिका, अष्टांग हृदयिका. हृदय इज हार्ट, अष्ट इज आठ. तो क्या कहते हैं, इस किताब का टाइटल क्या कह रहा है कि 8 दिल होते हैं हमारे पास. 8 होते तो वो जो एक गाने में 2 के लिए तरस रहा है कि काश कहीं ऐसा होता कि 2 दिल होते सीने में, यहाँ तो 8 है. तो ये प्रॉब्लम नहीं आती, वो सॉन्ग भी नहीं लिखा गया होता, इजंट इट. तो फिर ऐसा क्यों हुआ. और ये कौन है जिसने, अगर दूसरा मीनिंग लिखा जाए कि 8वां अंग, दैट इज अष्टांग हृदय का 8वां अंग, द 8th पार्ट, ये हिमाकत किसने की कि दिल को 8वें जगह पे रखा. इसे तो पहले जगह पर रहना चाहिए था. क्या लगता है आपको, है ना. जो भी हो, कुछ चीज़ें तो हम बिना जाने ही मरेंगे. शायद ये भी उन्हीं में से है. तो ना गलत समझेंगे ना सही समझेंगे. जान लीजिए कि दिस इज अ बुक ऑन व्हाट, हार्ट एलिमेंट्स, हृदय की बीमारी. ये जो होता है ना, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, और ट्रिग्लिसराइड्स, लिपिड प्रोफाइल, ये सब. हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. हाँ, तो एक अलग स्पेशलाइजेशन ही था हमारे यहाँ जो सिर्फ दिल का ख्याल रखता था. शायद हमारे एंशियंट ऋषियों को पता था कि हम मॉडर्न इंडियंस दिल का खेल बड़े लेवल पे खेलने जा रहे हैं. पानिनी वाज दी राइटर. थैंक यू. अगर पानिनी था तो बाघ बाघभट्ट. हाँ, बाघभट्ट ही होंगे, पानिनी नहीं होगा. ये भाई आदर्श कुछ भी लिख दोगे. जब नहीं पता तो देखो, मुझे नहीं पता होता है तो मैं पूछ लेता हूँ, जबकि माई माई प्रेस्टीज, माई सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है. लोग कहेंगे कैसा टीचर है. ठीक है. तो गलत बताने से बेहतर है कि ना बताया जाए. क्यों, क्या लगता है आपको. ठीक है ना. तो परहैप्स लिख देते तो बच जाते. सीधे लिखा पानिनी वाज दी ऑथर. ये बाघ भट्ट साहब हैं. तो भट्ट साहब को पता था. ठीक है ना. तो इन्होंने ये किताब लिखी. ऑल दिस बुक्स वर ट्रांसलेटेड. So now you understand the nature of books which are being translated and the kind of knowledge that was being what spread. And Indian medicine, Indian sciences, Indian technology, everything reaching outside India through this translated works. Clear? Then right next point. Now political, right? Weakening, WEAKENING, weakening of the defenses, weakening of the defenses of weakening of the defenses of the Indian subcontinent. सीधे लिख दो ना, Indian subcontinent. As the Arab invasion came to set, as the Arab invasion came to set a PRECEDENT. ऐसे कुछ कहते हैं क्या, कुछ वर्ड होता है ऐसा. As the Arab invasion came to set a precedent, PRECEDENT, precedent for the subsequent invaders, for the subsequent invaders or later invaders, for the subsequent invaders or later invaders. Clear? Then write next. New political experiments. New political experiments such as such as associating locally dominant classes, such as associating locally dominant classes, locally dominant classes with administration, with administration. Must be knowing that Arab administration in Sindh was mostly managed by the Brahmins.
and they accepted. Islam followed egalitarian philosophy. You must be knowing that in Islam there is egalitarianism. One Muslim is supposed to be brother of another. It was new basis of asabiya or brotherhood. Now, even in the last sermon, the Prophet of Islam talked about equality. Everyone is equal. But then this equality was mainly theoretical. If you are talking about equality, it means what? You are bothered about inequality which is actually existing, isn't it? Otherwise, why there is need to talk about equality if there is no inequality? So Islam has been an egalitarian religion with emphasis on inequality, but Muslim societies have always been informed by inequalities. Clear? And that was the case with Arab society also. Arabs were tribal people, and in tribal societies we generally do not have that much kind of that degree of inequality because they are mostly egalitarian. So maybe at that time when Islam was originating, the tribal society was breaking up, and like what we find in the later Vedic Aryan society in India, the society was getting differentiated and stratified. And the way we have in the Upanishads and Aranyakas some voices against emerging social differentiation and social stratification, in the same manner in Islam also we can have some voices against emerging social differentiation and stratification, and with more focus upon something old, and that is what? Egalitarian and egalitarianism. But history has its own rhythm. Ideology plays very important role in shaping its course, but at times history shapes its own course, and it also change the course of ideas. It produces its own thinkers, its own philosophers. So exactly we don't know what was the situation, but one thing is clear ki at theoretical level in Islam there was no difference. No one was privileged. But when the Arabs came to India in Sindh, they accepted Brahmanas as privileged classes. They accepted Varna system also. That was what part of their modification. So they made theoretical, what we can say, compromises for the practical needs of polity. They had to rule Sindh, and they had to rule Sindh in the same manner and using local resources. Don't you think that the East India Company later on also going to follow the same approach? That a policy of cultural non-interference and accepting existing privileges, when we have the people who are known as Orientalists like Warren Hastings. Later on we have Anglicist impulses and we have greater interference, and that interference also created conditions for the revolt of 1857. So this is what we find. So right here what we have written, locally dominant classes in administration. Then right, they admitted Brahmanas on a larger scale and also accepted them, and also accepted they admitted Brahmanas on a larger scale into administration or in administration, and also accepted their social privileges, and also accepted their social privileges as a part of the Varna system. Social privileges as a part of the Varna system, despite egalitarian sentiments, despite egalitarian sentiments of the new rulers, despite egalitarian sentiments of the new rulers of Sindh, despite egalitarian sentiments of the new rulers of the Sindh. Is this position clear? They also imposed jizya. Jizya. You may have heard of this term. Written differently, but go with the simple spelling. Jizya. They also imposed jizya for the first time
with some exceptions. Jizya for the first time with some exceptions, like the Brahmanas, women, children, disabled, Brahmanas, women, children, disabled, etc. Right? It was imposed in lieu of, it was imposed in LIEU, in lieu of military services. It was imposed in lieu of military services. Clear? See, here a little bit, right? The people of Sindh, right? Keep on writing. The people of Sindh were granted the status of, the people of Sindh were granted the status of Jimmis. People of Sindh were given the status of Jimmis, written both ways, Jimmis, that is protected people. Protected people. Protected people. Subject to the payment of, subject to the payment of kharaj, that is land tax. Subject to the payment of kharaj, that is land tax, and jizya. Jizya we have already written. Subject to the payment. Now what was kharaj? Land tax. Jizya we know that is also translated as poll tax, POLL. Now see, the situation was something like this. When the Arabs came across, the people, mostly nomadic people, and that was the case most of the time, unless until they reached Persia or they started encountering the Greco-Roman world, but that took place much later on. So they, most of the time, you must have heard of this kind of concept, that is whether Islam or death. Whether Islam or death was something meant for the poor and weak people or civilizations who lacked the capacity to resist the power of the Arabs. Getting this idea? So Arabs were quite aggressive towards them, and they gave them options like Islam or death. Or maybe they simply like the tradition we find, using ideology for what? Justifying the death. So why did you kill someone? Because that someone was not accepting the Islam. But the actual act of killing may be for looting and plundering. But whatever be the case, you must have heard of this kind of expression, whether Islam or death. Even if this option was given, this was for the poor people. But when they started coming across those people who were not that weak to be destroyed, like the Persians, like the Indians, so in their case, they changed this policy, and they did not give this option. They simply started acting like rulers. Okay, they are just ruling over those areas, and they also did not make efforts, deliberate efforts, as part of a state policy for conversion. Though socially it continued, it was encouraged, it was desirable. Getting this idea? Because a spread of ideology was also a spread of political influence and greater legitimacy for the new rulers in a new land. Getting this? But a state was not getting involved in all these matters of deliberately spreading Islam, particularly when it came to those cultures which had well established religious traditions. So those heathens, no, those heathens, you must have heard of people without any religion of Central Asia, like Turks, they were given this kind of options, and their conversion was also something that was more desirable. But people who were already having their own faith and faith system and well developed faith system, तो वहाँ conversion के लिए फिर ज़्यादा resistance होता.
So they used to call them, those kind of people, what? Protected people. These people are not going to be given this option, what? Islam or death. They are protected people, but subject to what? The payment of land tax पे करते रहो, and jizya देते रहो. ठीक है? Kharaj was something that was not meant for Muslims. Muslims were supposed to pay what is called ushr. This is, I'm just giving you some terminologies. Usr was something that a Muslim was supposed to pay. Kharaj was something that a non-believer was supposed to pay. But then, practically, the rulers, whether Arabs or Turks, did not make any difference between Muslim and non-Muslim subjects when it came to appropriation of land tax. Getting this? So usr was just a theoretical position. It was not imposed. Practically what was collected by the rulers from both Hindus and Muslims, or Muslims and non-Muslim, was kharaj. Is this position clear? Usr was something desirable, but perhaps not in the interest of the state. So state was not bothered about usr. State bothered mostly about the kharaj, irrespective of faith. Perhaps that is the reason why Barani, a theologian, person with deep commitment in Islamic jurisprudence, says that the Delhi Sultanate is not deendari, that is not a regime based on the principles of deen or religion, but jahadari, that is based on the principle of what? Worldly considerations, worldly principles, and not religious principles. You must be knowing there is a very famous book attributed to him. That book, the title of that book is Fatwa-e Jahadari. Author is Firoz Shah, not Firoz Shah Tughlaq, Ziauddin Barani, who was writing during the reign of Firoz Shah Tughlaq, the most orthodox of the Delhi sultans. So he was not very happy, and particularly not happy with Muhammad bin Tughlaq, who had earlier displayed quite Catholic approach and is criticizing Muhammad bin Tughlaq in so many ways. And it was mostly because of his criticism that with time we have developed this image that Muhammad bin Tughlaq had been a pagla बादशाह. तो मोहम्मद बिन तुगलक को पगला कराने में किसका रोल रहा? जियाउद्दीन बर्नी का रोल रहा. वी हैव अ लेसन हियर, हिस्टोरियन से पंगा मत लो, मतलब कि पढ़े लिखे लोगों से पंगा मत लो, या वो लोग जो लिखते हैं उनसे पंगा मत लो, इसलिए कि आपके बारे में पता नहीं क्या लिख के मर जाए, एंड यू आर नॉट इमोर्टल. अच्छा एक बात बताओ, मैं कब से सोच रहा हूँ, आप में से कोई ब्रेक क्यों नहीं मांग रहा? थके नहीं हो? क्लास देर से शुरू हुई है, पाप बोध में नहीं मांग रहे हो, या कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड, नो लॉन्गर इंटरेस्टेड, एंड द काइंड ऑफ चेंजेस आई वांटेड इन यू हैव टेकन प्लेस. आपको याद है ना, तब भी ब्रेक के लेकर थोड़ा सा तो बताओ, चाहिए भी नहीं चाहिए या हम लोग चलते रहें? चाहिए. अब देखो, अब तो बोलने के बाद जरूरत महसूस हो रही है, तो क्या किया जाए? ब्रेक चाहिए? 5 मिनट चलेगा ना? 5 मिनट्स? 5 मिनट ठीक है, वो तो निकलने में लग जाएगा. ले लो 10 मिनट, ऐश करते कराओ, ऐश जाओ. चलो मेरे ख्याल से हो गया 10 मिनट, मेरी घड़ी से तो हो गया 10 मिनट. अब शुरू कर सकते हैं हम लोग. So do you understand the difference between ushr and kharaj and how the things evolved? Now make a heading, write B. A was which invasion? Arab invasion. Now write B, and here write Turkish invasion. Turkish invasion. There were many invaders, we are not interested in them unless until something substantial happens or someone more noticeable comes in. So right here, the first major invader, the first major Turkish invader, the first major Turkish invaders, and they were Persianized Turks, we can say. The first major Turkish invader was Mahmud,
Mahmud, Mahmud Ghazni, Ghazni. Ghazni was his capital. So Mahmud of Ghazni, Mahmud Ghaznavid, you may find his names written differently. Go with the simple Mahmud Ghazni. Then write, he invaded, he invaded, he invaded India, India 17 times, 17 times in the first quarter of, in the first quarter of the 11th century. In the first quarter of the 11th century. First quarter of the 11th century is beyond 1000. So from 1000 to 1026, 27, he kept on invading. We are not going to take note of all his invasions, but the first major one and the last major one, I think we should take note of. So right here, his first invasion was, on the Hindu Shahi kingdom. Hindu Shahi kingdom. Have you ever heard of this kingdom? Hindu Shahi kingdom with its capital at Waihind, Waihind, with its capital at Waihind, 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 and control on a large part, control on a large part of Punjab and Afghanistan. Punjab and Afghanistan. The Hindu Shahi ruler, Jaipal, the Hindu Shahi ruler Jaipal was defeated and committed suicide. There is a side which is called suicide. What does it mean? खुदकुशी कहते हैं लोग इसको, आत्महत्या किया है कभी? कभी नहीं. तो फिर लोग जो बोलते रहते हैं ना, खुद को मिटा दो, खुद को ये कर दो, सब क्या है? The world is yet to be understood. Committed suicide. Can you tell me the reason? He could not accept the defeat. आपको नहीं लगता arrogance? ठीक है, हार गए, अगली बार फिर से देखेंगे, भाग लो, strategic retreats. But do you remember the Rajput notions of bravery, chivalry, warfare? ठीक है, हम कैसे हार सकते हैं? कुछ ऐसा रहा होगा कंसिडरेशन. कोई और भी कंसिडरेशन हो सकता है वाइफ से झगड़ा हुआ. होल हिस्ट्री इज नॉट नोन. आप समझ सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे लोग पब्लिकली कोई काम करते हैं, लोगों को लगता है कि देयर मस्ट हैव बीन सम पब्लिक प्रॉब्लम, लेकिन हो सकता है कि उनका पर्सनल हो. बिल्कुल, कभी कभी कुछ लोगों का बिहेवियर बिल्कुल समझ में नहीं आता. पब्लिकली, सोशली, एवरीथिंग वाज गुड, एवरीथिंग वाज फाइन, बट देन सो एग्जैक्ट रीजन तो हम नहीं जान सकते उसके सुसाइड के कभी, बट आफ्टर दिस बैटल ही कमिटेड सुसाइड. And as per the contemporary norms and notions, it seems that it was basically some sort of honor killing of oneself.
not accepting the defeat and committing a suicide. Is this position clear? Then right, the resistance was continued by the resistance was continued by his son and grandson. Son and grandson. So it was a long fight. Son and grandson Anand Pal and Trilochan Pal. Anand Pal and Trilochan Pal. Anand Pal and Trilochan Pal. Clear? Right? Earlier, Jaipal had Jaipal had formed 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 an alliance of earlier Jaipal had formed an alliance of the Indian powers powers against Indian powers against Mahmud Ghazni. Now this piece of information is very important for us. Stop here. We are going to analyze this statement and thereby we can know some traits. So there is always it can be called blame also, but most of the time Indian rulers of the early medieval time are accused of ignoring the developments taking place outside world. The same is the case with the Indian rulers of the 18th century. Whenever we have foreign invasions, we have Indian rulers neglecting the border areas, not being wise enough to pay attention to the political developments, scientific developments, military developments taking place outside India, and that led to creation of political vacuum, and that vacuum created conditions for the foreign invasion. So about science and technology, of course, the differences became more clear in the modern time. In the pre-modern societies, we cannot talk about science and technology because there was hardly any difference between the East and the West. Though a specialization may be different, but the kind of scientific differences we have, the kind of material differences we have, all generated mainly by the industrial revolution and the concomitant development of capitalism, isn't it? Research and development, and we must have heard of कि necessity is the auntie of inventions. मदर सुना था आपने? अच्छा ठीक है, मदर ऑफ इन्वेंशंस. इन्वेंशंस तभी होते हैं जब कमर्शियली वायबल होते हैं और इकोनॉमिकली नीडेड होते हैं, इजंट इट? नहीं तो खामखा R&D पे कौन खर्च करेगा? तो from early time to the modern time, we have this kind of notion about Indian rulers, that Indian rulers have neglected the border areas, the concerns and the developments. Now this example is suggestive of the fact that at this time Indian rulers were not unmindful of at least political developments taking place on the border of India or outside India, and Jaipal was well aware of what is happening, and he was not only aware but was also taking measures. And his measures included formation of an alliance of the Indian powers. So we can't say that Indian rulers were so ignorant. We do find instances, and if we have to find out their weaknesses or the causes behind the invasions or success of the invaders, we cannot overemphasize this ignorance. Is this position clear? Then continue writing in the same. And write, his last major invasion was his last major 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 invasion was 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 on the temple of Somnath, on the temple of
Somnath. Where? Which place? Right? Situated in Kathiawad. Kathiawad, Gujarat. Kathiawad, Gujarat. It was around 1025 26. Then right, he 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 looted, looted, looted the temple reaches. He looted the temple reaches, comma, killed, killed, killed the attending priests, priest, attending priests or priests in attendance, and destroyed or broke, broke, destroyed the idol. It was linga, perhaps Shiv temple. Destroyed the idol. Right? He celebrated this by assuming the titles like, he celebrated this by assuming the titles like Ghazi, 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 in bracket, right, Islamic warrior. So we have mercenaries in Central Asia, West Asia, who called themselves as Ghazis. And most of the time they presented themselves as Islamic warriors, but their main interest was in war booty. You must be knowing that pre-modern warfares were different from the modern warfares, and in pre-modern warfares the issue of war booty had been a major motivating force. You must be knowing about Maratha plundering raids called Mulkgiri. You must be knowing about Pindaris also. So as late as 18th and 19th century, we have the role of war booty, looting and plundering. Of course, in the modern time, warfares are now different, and war booty or issue of war booty is not that much important. But in pre-modern societies, war booty always important. So we find people who were Jangjus, that is, they were not part of military. They were simply well-trained people, well-trained in horsemanship, well-trained in using swords and other weapons. And whenever they found any opportunity, they simply joined any military expedition, just in the hope of what we can say war booty, and they received a substantial share of the war booty that kept them motivated for participating in future adventures. But they styled themselves not as looters and plunderers, or not as invaders, but as Ghazi, that someone who is fighting for the cause of religion or cause of Islam. Clear? So now it became fashionable for everyone to present himself as what? Ghazi or Islamic warrior, that is doing something for Islam. Mahmud Ghazni did exactly the same thing when he assumed the title Ghazi or Islamic warrior, and one more title, and idol breaker. Idol breaker. So he was familiar with English, that he assumed the title of idol breaker. Write in bracket But Shikan, B-U-T, But is idol, S-H-I-K-A-N, Shikan, But Shikan, idol breaker. शिकन मतलब ब्रेकर. आजकल तो बड़े कूल गाने भी आए हैं, मैंने शिकन वर्ड का वो इस्तेमाल सुना है कभी इधर हाल फिलहाल में. शिकन इज व्हाट? तोड़ देना. बुत शिकन, बुत को तोड़ने वाला. और दिल शिकन कौन हो जाएगा फिर? दिल को तोड़ने वाला. ठीक है. और मुंह शिकन कौन हो जाएगा? मुंह को तोड़ने वाला. मुंह भी तो टूटता है ना. मुंह टूटता है, फूटता है. मार के मुंह फोड़ देंगे या तोड़ देंगे? मुंह तोड़ देंगे ना. पता नहीं. तो एक गाना सुना होगा ना आपने शिकन वाले पे, बता दो.
वादा शिकन, वादा शिकन कौन हुआ? वादा तोड़ने वाला। कुर्सी शिकन, कुर्सी तोड़ने वाला। और कौन? और कौन होगा? तो समझ तो गया ना। हाँ, इसमें मुझे एक शेर याद आ गया। हाँ, मैं वही देख रहा, तमीज है कि नहीं सुनने की। तमीज होगी तो सुना देंगे। याद आ गया तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। वो कुछ ऐसे है कि सुनाया भी होगा पहले आपको, नहीं सुनाया था? वो कुछ यूं है, देखो मैं, ऐसा है नहीं कि मेरी ऐसा कुछ है, याद आ गया तो बता रहा हूँ। तो आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है ना? हाँ, ऐसे मत घूरो मुझे, ठीक है ना? थोड़ा इधर उधर देखोगे तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे बिल्कुल सामने ही देखते रहो, हाँ सुना, तो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा मुझे। तो मतलब कुछ यूं है कि, अब कैसे है बता रहा हूँ। मैं भूल गया। मोरल प्रेशर, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतने सारे लोग सुनने जा रहे हैं। नहीं, मैं बता दो। तौबा तो समझते हो ना, तौबा, रिपेंटेंस। तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरी तौबा शिकन। नहीं समझ में आएगा, इसलिए भी मैं हिचक रहा था। आपको आपके लेवल का सुनाऊंगा। वो कौन सा होता है? चींटी चढ़ी पहाड़ पे, ठीक है, दाने के वास्ते, और हम कोचिंग आते हैं पढ़ने के वास्ते। जब इस तरह का जब शेर हो ना तुकबंदी, तो आपको मजा आता है फिर उसमें। लेकिन थोड़ी, अगर लफ्जों का इंतखाब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए आपको, फिर मजा नहीं आता। तो कहो तो चींटी चढ़ा दूं पहाड़ पे, वो भी मेगास्थनीज वाली चींटियां। मेगास्थनीज पता ना? मेगास्थनीज बोलता है इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी कुत्ते के बराबर चींटियां होती। ऐसी चींटियां पहाड़ों पे जल्दी चढ़ के उतर जाएंगी, ठीक है? तो मेगास्थनीज बोलता है कि इंडिया में, और वो चींटियां कैसी होती है आपको पता है? गोल्ड डिगिंग, सोना खोद के निकालती। दिस इज नॉट मी, दिस इज मेगास्थनीज, बात चींटियों की आई तो मैं कह रहा हूँ। तो नहीं आया ना समझ में? तौबा मेरी जाम शिकन, जाम मेरी तौबा शिकन, सामने है ढेर लगे टूटे हुए पैमानों के। नहीं आएगा समझ में? आया? आया? कितनों को आ गया वो हाथ उठाएं। किसी को नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ। तौबा, रिपेंटेंस, मतलब तौबा कर लेते हो तो गुनाह नहीं करते। गुनाह, सिन, ठीक है ना? मैंने अगर तौबा कर लिया कि आज से मैं मोबाइल टच नहीं करूंगा, तो इफ आई एम टचिंग इट, आई एम ब्रेकिंग माई तौबा, ठीक है? तो ये तैयारी में तो तौबा बार बार टूटता है। ठीक है? तो तौबा मेरी जाम सिकन, जाम कहते हैं दारू को। अब आएगा समझ में? ठीक है, जाम थोड़ा सा बेहतर नाम लगता है ना। अब कोई कहे कि जाम पिला दे, कोई दारू पिला दे, दोनों में अंतर है, थोड़ा सुन के अच्छा, थोड़ा सा मतलब अलग फीलिंग आती है। तो जाम, देखो जाम कुछ भी हो सकता है, विस्की हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, ताड़ी भी हो सकता है, दैट कैन ऑल्सो बी जाम। ताड़ी समझते हो ना, ताड़ के पेड़ से निकलता है हाँ, सम ऑफ यू मे बी डूइंग। सो तौबा मेरी जाम सिकन, जब मैं तौबा करता हूँ तो जाम तोड़ देता हूँ। बट जाम मेरी तौबा शिकन, जाम देखता हूँ तो इतना टेम्पटिंग है कि तौबा तोड़ देता हूँ। और इस तरह से दोनों के तोड़ने का सिलसिला अगर बहुत देर तक चले, तो मेरे सामने किसके ढेर लगेंगे? टूटे हुए पैमानों। एक्चुअली शायद पहले के लोग इतने चालाक थे नहीं, या उनकी उनकी लाइफ में स्टील था नहीं। लेकिन एक बात बताओ, आज के दौर में भी स्टील के गिलास में कौन दारू पीता है जी? ये वो लोग होंगे जो चुरा के छुप के पीते होंगे, ठीक है, जिसको पता ना चले। आज भी लोग ग्लास पसंद करते हैं, मैंने वो चीज जो टूट सके, मतलब आई एम नॉट, फर्स्ट टाइम अवेलेबल ग्लास नहीं रहता हॉस्टल में। तो हॉस्टल में तो हमें पता है क्या करते हो आप, ठीक है? हाँ, हॉस्टल में तो आप लोटा में पी लोगे, उससे क्या है?
कटोरा में पी लिया आपने, ठीक है, तो वो अलग चीज है। तो ये खत्म हो गया महमूद गजनी। मोटिव्स की अगर हम बात करें तो अगेन, as I was telling you, at times motives are attributed later on. Why and under what circumstances I did certain thing, I committed or omitted certain deeds, may be interpreted differently by different generations of historians, depending upon their biases, prejudices, preferences, and the nature of politics and the demand of the political discourse. So when so much complexities are involved, we are not going to make any comment on his motives. But one thing, one must be clear that it was mainly for looting and plundering of the Indian resources, which he utilized in his military expeditions in the South Asia and West Asian regions. And he also appointed Indian soldiers, Indian commanders. One of his famous commander was Tilak. So this is, I think, this is the one thing we can write here. All other explanations also we are not going to deny, but don't worry, UPSC is not going to ask you this kind of controversial questions and giving you so many controversial options. That is not going to be the case. So just write here, right? It seems that Mahmud Ghazni was not interested in. It seems that Mahmud Ghazni was not NOT interested in spreading or extending his empire, not interested in spreading or extending his empire towards India, as he did not try to retain, as he did not try to retain the conquered areas, as he did not try to retain the conquered areas. It means he was not interested in empire building and extending his empire towards India. Right? He was mainly interested in looting and plundering of. He was mainly interested in looting and plundering of the Indian riches and resources. Indian riches and resources which he utilized, which he utilized in his Central Asian and the West Asian, in his Central Asian and the West Asian expeditions. Central Asian and the West Asian expeditions. He also appointed Indian soldiers and commanders. He also appointed Indian soldiers and commanders, and one of his famous commander was one of his famous commander was Tilak, Tilak. One of his famous commander was Tilak. So, okay, in Indian history, he is just remembered as a looter and plunderer, because his role is confined to that only. In the Indian history, he is just remembered as a looter and plunderer. But in the Persian history, he was a Persianized Turk. But in the Persian history, he is remembered as he is remembered as 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 a hero of as a hero of the Persian cultural revival. Persian cultural revival against the Arab domination. Persian cultural revival against the Arab domination.
So Arabic and Persian conflict. See, Persian people accepted Islam as their religion, as their faith, but they retained their traditional lifestyle, their traditional ideas, their traditional heroes. They never discarded them. Clear? So you must be knowing that there is a very famous Persian poet whose name is very important in India also, because in the medieval time we have growth of Persian literature, and last to last year there was a question also on the Persian literature, that how Persian literature contains the spirit of the time. So do you know about, or have you ever heard of about a very famous Persian author whose name is Firdausi? Firdausi, the author of Shahnama. So right here, the famous Persian poet, the famous Persian poet Firdausi, the famous Persian poet Firdausi has dedicated his, perhaps spelling is correct, his magnum opus is most famous book, his magnum opus Shahnama, Shahnama to Mahmud Ghazni, to Mahmud Ghazni, Shahnama to Mahmud Ghazni. Now, what is the content of this work? So, right, in this work, Firdausi has celebrated. In this work, Firdausi has celebrated the pre-Islamic. So, this work has nothing to do with Islam. Pre-Islamic Persian heroes. Pre-Islamic Persian heroes, myths and legends. MYTHS, myths and legends. And who is the author? Firdausi, writing at the behest of Mahmud Ghazni. You must have heard of that famous story. Mahmud Ghazni had promised 2 gold coins for each verse composed by this poet whose name was Firdausi. And Firdausi, encouraged by the Sultan, kept on composing, and finally he created his magnum opus, this much thick. लेके गया, and Mahmud Ghazni, a looter and plunderer, is also known for being a miser, MISER, होता है ना, उसका मतलब क्या होता है? कंजूस. वो लोग जो अपने पैसे से चाय नहीं पीते, पिलाते तो खैर हरगिज़ नहीं है. देखते हैं ऐसे लोग होंगे आपके आसपास, होंगे, पहचानते हैं ना आप उन्हें. तो उसने जब देखा, वर्सेस काउंट किए गए, तो इतने गोल्ड कॉइन्स हो गए कि उसने मना कर दिया. बोला कि कोई बात हुई, लिखने को बोला तो क्या मतलब है. 2 लिखते, 4 लिखते, 5 लिखते, लिखे गए, ठीक है, पूरा किंगडम बेचना पड़ेगा मुझे. मना कर दिया उसने. बोला कि नहीं, सॉरी, दिस इज अनफेयर, यू हैव रिटन अ लॉट. तो अब बेचारे पोएट का, जिसने अपनी ज़िंदगी दी थी, दिल टूट गया. पहले दिल टूटता था तो लोग मर जाते थे, आजकल पता नहीं क्या होता. आज भी लोग मर जाते हैं. नहीं मतलब, तो ये पोएट ना बीमार पड़ गया, मतलब वो ज़्यादा टेंशन ले लिया, मरने लगा. बाद में मोहम्मद गजनी को रियलाइज़ हुआ कि ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, तो उसने पैसे भिजवाए. लेकिन आपको पता है ना, पोएट्स आर नोन फॉर एग्जैगरेटिंग थिंग्स एंड प्रेजेंटिंग थिंग्स वेरी रोमांटिकली, वेरी आयरोनिकली. दे हाईलाइट आयरनीज, ठीक है. तो इसके बारे में लिखा जाता है कि एक तरफ से सुल्तान यानी कि महमूद गजनी का कासिद यानी एजेंट गोल्ड कॉइन्स लेकर आया, और दूसरी तरफ से फिरदौसी यानी पोएट का जनाजा, जनाजा तो समझते हो ना, द लास्ट जर्नी, वो जनाजा जा रहा था. और इस तरह से एक पोएट ने एक सुल्तान को कर्जदार छोड़ दिया. मतलब इवन अ सुल्तान कुड नॉट पे द डेट ऑफ अ पोएट, ठीक है. और शाहनामा रिमेंड अन, क्या कहते हैं, रेम्यूनरेटेड वर्क, जिसके लिए उसके पोएट को पैसा नहीं मिला.
तो हम लोग मुफ्त में ही पढ़ रहे हैं इसको. पोएट वॉज नॉट रिवार्डेड फॉर दिस. तो खैर जो भी हो, what is important is कि in this book we have celebration of pre-Islamic and pre-Arab cultural myths. That is nothing but Persian nationalism against Arab domination. Write just one more line about this man and then we can shift to the other invader. Right? He is also regarded as the first Sultan. He is also regarded as the first Sultan in the Islamic political traditions. First Sultan in the Islamic political traditions. आपके साथ फिरदौसी जैसी कोई बात हुई है? किसी ने कुछ लिखवा लिया हो, पैसे ना दिए हो? अक्सर कोचिंग वाले ऐसे काम करते हैं, मटेरियल बनवा लेते हैं आपसे और फिर पैसे नहीं देते. ठीक है, ले लिया. कुछ लोग तो अपने नाम से भी छपवा लेते हैं. छोटे छोटे जो ऑथर्स होते हैं इनके साथ बड़ा घपला होता है जी. आपके साथ कभी हुआ ऐसा, किसी ने कुछ लिखवा लिया और उसके बदले में पैसे नहीं दिए? नहीं हुआ? मतलब लिखने की उम्र आई नहीं है अभी आपकी, लग रहा है. मेरे साथ भी नहीं हुआ, मैंने लिखा ही नहीं. तो कहाँ से लूट लोगे, लिखेंगे तब ना. तो अब लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, मोहम्मद गोरी. गोरी, ये बहुत गोरा था इसलिए इसको गोरी बोलते हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ गोरी एंड गोरी के गुलाम्स, कुतुबुद्दीन ऐबक, एल तुतमिश. नाम सुना है कभी? हाँ. नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स मोर फेमिलियर थिंग्स इन हिस्ट्री, टुवर्ड्स दिल्ली सल्तनत. तो लिखिए, अनलाइक महमूद गजनी, unlike Mahmud Ghazni, the next important invader, Muhammad Ghori. Unlike Mahmud Ghazni, the next important invader, Muhammad Ghori, seems to be interested in extending his empire towards India. Seems to be interested in extending his empire towards India from the very beginning. From the very beginning. From the very beginning. This change in the attitude. This change in the attitude is explained. This change in the attitude is explained in terms of the political changes, in terms of the political changes taking place in the regions, like political changes taking place in the regions like Central Asia and the West Asia. In the regions like Central Asia and the West Asia, right? In those regions now there had developed powerful estates. That is, by the time we have Muhammad Ghori on the scene, powerful estates blocking, 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 आप ब्लॉक कर देते हो ना वैसे ही, blocking the westward expansion of the Gorian Empire. Westward expansion of the Gorian Empire. तो उधर के जो पावरफुल स्टेट्स थे उन्होंने गोरी के एम्पायर को वेस्टवार्ड एक्सपेंशन ऑफ द गोरियन एम्पायर उधर ब्लॉक कर दिया. तो उधर ब्लॉक कर दिया तो अब उसके पास ऑप्शन क्या था? ईस्ट की तरफ ही उसके एम्बिशंस रियलाइज हो सकते थे.
So he was interested from the very beginning in extending his areas or his empire towards India. ठीक है? देखिए कि he started his Indian campaigns. He started his Indian campaigns in the last quarter of. Muhammad Ghazni had started in the first quarter. He is starting in the last quarter. Last quarter of the 12th century. So they are separated by almost 200, more than 200 years, isn't it? 300 years we can say. Not 300 exactly, but 10, 11, 12, around 250, more than 250. So it is not that one day or 2 day or tomorrow, all those developments had taken place in 250 years. Can you imagine the amount of changes which can take place during these years? Clear? So today it seems that Muhammad Ghazni came and then he left, and then we have Muhammad Ghori, but there is a gap of, can you imagine living in 1750 today? It is something like this. Imagine Battle of Plassey is taking place around us. Yesterday was the Battle of Plassey, and we in Delhi are subjects of Shah Alam II, the fugitive Nawab, no Alamgir. तो इतना टाइम बीत चुका था इस बीच में. हिस्ट्री में वक्त की कीमत शायद इस बात पे डिपेंड करती है कि चेंजेस कितने हुए. तो क्या लिखा आपने अभी? व्हाट वाज द लास्ट लाइन? Last quarter of the 12th century, and one of his early achievement was, the occupation of, Lahore. One of his early achievement was the occupation of Lahore by defeating the descendants of Mahmud Ghazni. By defeating the descendants of Mahmud Ghazni. Then write his attempts to invade, invade Gujarat, Saurashtra, Malwa. You must have heard of Makran coast, and then the Thar desert. So across the Thar, from Multan, across the Thar, reaching which place? Gujarat. So that is very dangerous journey, but he had undertaken it. So what we have written? His attempts to invade Gujarat. His attempts, plural or singular? What we have written? His attempts to invade Gujarat were frustrated by the powerful Chalukya rulers. Chalukya, Chaulukyas, Chalukya rulers, or Solankis. They are also called as Solankis of Gujarat. And a Solanki ruler, Bhim II is, particularly known for, and a Chalukyan ruler Bhim II is particularly known for defeating Muhammad Ghori. He was also defeated by the famous Chauhan ruler. He was also defeated by the famous Chauhan ruler, Prithviraj Chauhan III.
in the first battle of in the first battle of Tarain, Tarain, first battle of Tarain in 1191, in 1191. But he emerged victorious. But he emerged victorious in the second battle of Tarain. He emerged victorious in the second battle of Tarain the very next year. So if the previous year is 1191, the very next year would be 1192. How intelligent, smart answer. Mathematics आपकी बहुत अच्छी रही होगी. 1192 in the very next year, that is 1192. ठीक है, full stop. Now what happened in this battle and what happened to Prithviraj Chauhan? We exactly don't know, or we know at times we don't believe in it, or history is always shrouded in mystery, doubts, and multiple interpretations and explanations. So one very real possibility is, and that is something accepted by most of the historians, that Prithviraj Chauhan died in the battlefield along with the Tomar ruler of Delhi, whose name was Gobind Raj. So both Gobind Raj and Prithviraj lost their lives in the second battle of Tarain while fighting against Muhammad Ghori. Is this position clear? And this is what most of the historians believe in. But then there are some indications and some findings which disturbs this general acceptance of both losing their life. Even if you accept Govind Raj as the one who was killed in the battle, accepting Prithvi Raj becomes a little difficult. When we find some coins with the names of both Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. So unless until it's a case of re-striking the coins of Muhammad or Prithviraj Chauhan by Muhammad Ghori without a striking of his name, that is name of the previous ruler, availability of such coins not possible. Or alternatively, it may be a case, and as was the practice at that time, that defeated rulers were accepted as feudatories. So it seems that Prithviraj Chauhan was allowed for some time to rule under Muhammad Ghori as a vassal or as a feudatory, going with the traditions of the Indian subcontinent. And in that capacity, Prithviraj Chauhan acknowledged the supremacy of Muhammad Ghori by coining his name on his, by minting his name on his coins. Is this position clear? Now, this is also quite genuine theory, but we understand that what happens to such theories. And then there is one more theory that is mentioned by Chandra Bardai in his famous work Prithvi Raj Raso. I think we all are familiar with this. And two of the legends about Prithviraj Chauhan, I think we all are familiar. The first is son Yogita and her abduction, of course not without her consent. That famous Swayamvar by father of son Yogita, Jayachand. Have you ever heard of this kind of? Almost all of us since childhood. And the second legend is that how in the court of Muhammad Ghori, one fine morning, Muhammad Ghori came to know about a rare talent possessed by Prithviraj III Chauhan. And that talent was associated with hitting a target without looking at it, simply by hearing the voice or any sound emanating from that source. So Chandra Bardai says that both of them had been taken prisoner, and then one fine morning when Ghori came to know about this talent, he wanted to see it
on his own, and Prithviraj Chauhan was invited to the court or taken to the court since he was prisoner, given a bow and arrow, and a target was set for him. But this poet friend was present in the court, and this poet friend composed something instantly to indicate the location of the Sultan. And this gentleman, Prithviraj Chauhan, instead of hitting the target, hit the Sultan, and Sultan died. In order to avoid torturous and undignified or indignified death, both Chandrabardai and Prithviraj Chauhan killed each other. Can it be accepted? Then who wrote this? When both of them died in the court, who wrote it? So poetic versions are mostly exaggerated versions, and their purpose is not only to convey the reality, but also to praise the pattern. And that's why historians take them with a pinch of salt. They don't take them as at their face value. Is this position clear? So exactly what happened to Prithviraj Chauhan in this battle, we precisely don't know. Two more authentic theories, that he was allowed to rule for some time, that also seems to be quite plausible or possible, and that is also a possibility that Prithviraj Chauhan lost his life in the battle. That was second battle of Tarani. Is this position clear? So we are not going to write anything about it. Now whether Prithviraj lived or not, that is not important. What is important is what is going to happen after Prithviraj Chauhan. So don't you think a state formation is going to take place? And a state formation requires territory and then population. Here territory was with population already, very thickly populated area, Gangetic Plains, and then government, then sovereignty, both internal and external. This is what may be associated with the process of a state formation. So we are now going to pay attention to that process. Just allow me 5 more minutes. I will be giving you some shape, and then what will be done is that I am going to share some class notes with you. I will be avoiding classroom dictation wherever possible, a little, or wherever I have reduced things to writing, and I think they are quite easy and don't pertain to what we can say very important areas. Clear? So I will try to save you from the burden if you consider it to be burden, and of course in the last moment of your preparation, that is going to be time saving device also. But believe me that they are my class notes. The way I dictate you, someone has noted and shared with me, and that I am going to share with you. Is this position clear? I keep on revising, keep on editing also. So they are my notes. I have not downloaded and sharing with anybody, sharing from any other source. If you find anywhere else similar notes, do let me know. उसका मतलब ये होगा कि लोगों ने मुझसे चुराया है, ठीक है, उनसे मैंने नहीं लिया, ठीक है ना. तो वो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, और कल की क्लास में आप आएंगे ना? अभी मेरी क्लास है, एक वजह से मेरी ही क्लास है, फिर से दोबारा आप ही के साथ. यहीं पे है तो फिर तो हमारे और आपके बीच की ही बात है. फिर 15 मिनट क्यों, थोड़ा और लेते हैं, आधा घंटा सही रहेगा ब्रेक के लिए. खाना खाओगे? सच में इतनी गर्मी में कौन खाता है जी? खाना तो पड़ेगा, वो तो मजबूरी है, ट्रेडिशन है ऐसा. अच्छा तो एक काम करो, बस इसको 2 मिनट में लिख लो, ठीक है. अब फिर मैं आपको 15 पे छोड़ दूंगा, ठीक है ना. 11 हो रहा है, 12 11, इतना देखो, इतना तो मैं कभी भी चुरा लेता हूँ, ठीक है. तो आज क्यों छोड़ूं, ठीक है ना. मैं 4 मिनट बाद आपको छोड़ने जा रहा हूँ. 4 मिनट के बाद आपकी दुनिया बहुत हसीन हो जाएगी, ठीक है. अभी थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो, ठीक है.
चलो क्या लिख रहे थे? हाँ लिखिए कि द गोरियन विक्ट्री इन दिस बैटल, द गोरियन विक्ट्री इन दिस बैटल led to the establishment of Turkish control. The Gorian victory in this battle led to the establishment of Turkish control. Establishment of Turkish control. मतलब हम लोग मिले नहीं, मिले तो खूब मिले नहीं, ऐसा ही है ना? हाँ, कल भी मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, क्या लिख रहे थे आप? On the famous triangle of, if that is triangle, on the famous triangle of Lahore, Delhi, Ajmer. Lahore, Delhi, Ajmer. Can you understand this triangle? Can you imagine this triangle? Lahore, Delhi, Ajmer. Since Gori was interested in, since Gori was interested in keeping the areas, keeping the conquered areas in his control. We know he was interested in empire building. Since Gori was interested in keeping the conquered areas in control, conquered areas in control, he appointed Kutubuddin Aibak. Now this man is entering the history. Kutubuddin Aibak, a slave officer. Slave officer. Such slaves had only one limitation, that they could not become sultan. They were not domestic slaves, political slaves. Slave officer of Gori, as the person in charge or caretaker, as the person in charge or caretaker of the conquered areas, caretaker of the conquered areas before 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 leaving for his capital, before leaving for his capital. Now you people can also leave for your respective capitals. ठीक है, ब्रेक कह लो या अगली क्लास कह लो, जो कह लो, इसके बाद मिलते हैं. Meanwhile, I am going to share those class notes with sir and with a request कि हमारी जो टेक्निकल टीम है इस बीच में उसको शेयर कर दें, ताकि हम लोग क्रॉस रेफरेंसेस कर सकें, देख सकें. ठीक है ना? We will have discussion in the class, don't worry about that. Only the dictation part will be shared in form of the class notes. Is this question clear? तो चलिए दफा हो जाइए, नहीं देखना चाहता मैं आपको.